No balls in 2019, while Shaheen Shah Afridi has been terrific. He's almost redeemed himself straight away, but now it's Wahab Riaz's turn. Since 2019, he's bowled 29 no balls, which is most that any bowler has bowled. So he does have a problem. I think once he's in rhythm, he's quite a destructive bowler, or a bowler who can roll teams over. So they want that Wahab Riaz to turn up today. Lovely, you're just relaxing, chilling. Sikandar, as always, cool. Even though it's pretty hot, you don't even venture outside, so you're never hot. I haven't reached that stage where they allow me outside. Wahab Riaz still having a bit of a, he seems to be a little unhappy with this run up and the landing. He was just having a look at the popping crease. Comes again. As he said, on his day, he can completely change the game single-handedly. He's got all that experience, and he's pretty much used to bowling second change. He knows exactly what's required of him. He's still in the power play, and is the fourth bowler that's being used by KPK. They started off with Hafiz, Usman Shinwari. Shaheen's got 2 wickets, and now Wahab Riaz. Plenty of options available. But Shoaib Malik as well, if they want to continue more off spin. They'd be happy if they can get somewhere around 50 at the end of the power play. 2 wickets down. Ideally, sides would be looking at 200 batting first. In the afternoon, maybe 10-15 more. Don't mind that. Already it's a much better start, a much better opening over for Wahab Riaz. Just gone for 1. It's a terrific over if you look at it that sense, but if you look at the previous game, I think he'll be very satisfied with the way things are going. Needs to close this over out, and I think KP are in a much better position. A terrific over, just 1 off the 5th. It's 37 for 2. सैंतीस 2 विकेट खोकर बड़ी शानदार बॉलिंग की है आज। बिल्कुल अब से 48 घंटे पहले के मुकाबले में मुख्तलिफ टीम नज़र आई है केपी की। उन्होंने दोनों ओपनर्स से जल्दी छुटकारा हासिल कर लिया। शाहीन अफरीदी जिन्होंने ये 2 विकेटें हासिल की थी, उनको अब हटा लिया गया है और रिजवान उनकी जगह पर शिनवारी का एंड तब्दील कर रहे हैं। पहले पवेलियन एंड से 1 ओवर में 15 रन दिए थे उस्मान शिनवारी ने इस साइड से, क्योंकि ये हवा के साथ साथ जाएंगे, इसका भी फ़ायदा हो सकता है। पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ, डिफ्लेक्ट किया इसे लॉन्ग लेग बाउंड्री की जानिब। स्क्वायर लेग से फील्डर आए, 2 रन तक महदूद कर दिया। आज ज़्यादा अच्छी बॉडी लैंग्वेज भी लगी है, अच्छी फील्डिंग कर रही है ये केपी की टीम। ज़ैनब अब्बास को हम खुश आमदीद कहते हैं कॉम बॉक्स में।
शुक्रिया तारिक साहब। डेफिनेटली मैं कहूँगी कि इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस नज़र आ रही है हमें केपी की तरफ से, एंड मेनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि शाहीन शाह ने जो 2 विकेट्स लिए उससे बिल्कुल पासा पलट गया। उस्मान शनवारी का ये साल कुछ इतना अच्छा नहीं रहा। अगर देखा जाए तो उनकी जो इकॉनमी रेट है वो इस साल 10 की है। 10 पर ओवर वो जाते रहे हैं एंड बहुत एक्सपेंसिव रहे हैं। पिछले मैच में भी उनको 47 रन्स पड़े थे नॉर्दर्न के अगेंस्ट। कुछ लाइन में भी जो है एक तसलसल नज़र नहीं आ रहा। अगर आप देखें अभी भी थोड़ी सी लग रहा है कि लेग साइड पे करा रहे हैं। और विकेट भी एक ही हासिल की है इस कैलेंडर ईयर में 2020 में। बहुत से अफराद की तरह दुनिया भर में इनको भी ये साल रास नहीं आ रहा। 7वां मैच खेल रहे हैं, 1 रन और कंसीड किया। 2019 में इनका रिकॉर्ड अच्छा था, 22 मैचों में 31 विकेटें ली थी। इकॉनमी रेट 8.6 का था, जो अब बुरा होकर 10 से आगे निकल गया। मुझे याद है श्रीलंका के अगेंस्ट एक बड़ी अच्छी इनकी लिमिटेड ओवर्स में सीरीज़ गई थी। बहुत विकेट्स भी इन्होंने ली थी, इनको मूवमेंट भी वहाँ पे मिल रही थी। फिर कराची किंग्स के साथ भी हमने इनको देखा है। सो ये नहीं है कि इनके अंदर वो एबिलिटी नहीं है, लेकिन फॉर्म काफ़ी देर से डाउन रहा है। यहाँ पर सूरत हाल दिलचस्प हो सकती है, क्योंकि इनकी हमेशा कोशिश होती है कि लेफ्ट हैंडर को ये ज़्यादा बॉलिंग करना पसंद करते हैं। हारिस सुहेल अब इनके मद्दे मुकाबिल होंगे। इनके लिए थर्ड मैन को पहले ही फाइन किया गया है। फाइन लेग को आगे बुला लिया गया। अच्छा शॉट, लेकिन फील्डर हैं स्क्वायर लेग पर मोहम्मद मोहसिन। एक ही रन मुमकिन हो सका। ज़्यादातर फास्ट बॉलर्स पर इन्हिसार है खैबर पख्तूनख्वा का। उनके पास पिछले मैच में 4 बाएं हाथ पेसर थे, आज 3 हैं। नायब कप्तान जुनेद खान को नहीं खिलाया गया और उनकी जगह पर आज टीम में शामिल हुए हैं आसिफ आफरीदी। वो भी लेफ्ट आर्मर हैं लेकिन स्पिन बॉलिंग करते हैं। गेंद और 4 रन्स। बिस्मिल्लाह खान जो है पिछले मैच में उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। बड़ा अच्छा, बड़े टैलेंटेड हैं और इस वक्त ज़रूरी यही है कि इन दोनों को एक पार्टनरशिप बनाएं, थोड़ी देर टिके रहें विकेट पे। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो जैसे कि मैं कह रही थी कि लेंथ और लाइन अभी इनका कुछ रिदम बन नहीं रहा। पहले भी एक जो पीछे फील्डर ने स्टॉप किया था वो भी एक शॉर्ट बॉल थी। शॉर्ट बॉल तो हमने देखा है अभी तक टूर्नामेंट में, इस टूर्नामेंट में अनलेस कि आपकी एक्सप्रेस पेस है, इट्स प्रॉब्ली नॉट अ गुड आइडिया कि आप इन विकेट्स पे वो लेंथ कराएं। एक बार फिर फ्लिक किया लेकिन एक ही रन मुमकिन हो सका। स्ट्राइक रहेगा बिस्मिल्लाह के पास। 6 ओवर्स और पावर प्ले का मरहला तमाम हुआ 46 पर। तो मुल्तान में आज निस्बतन गर्म दिन है। दूसरा पहर गुजर चुका है दिन का। इससे चाय का दौर दौरा है। ये हम देख सकते हैं डग आउट बलूचिस्तान की टीम की, जिसमें कई जाने पहचाने चेहरे नज़र आ रहे हैं। यासिर शाह, उमर गुल आज भी नहीं खेल रहे। ये इनके करियर का आखिरी टूर्नामेंट है, इसके बाद रजिस्टर्ड क्रिकेट छोड़ देंगे। जब ये अपने पीक पे थे तो मेरा ख्याल है इनसे बेहतर कोई बॉलर देखने को नहीं था। गुलडोजर इनको कहा जाता था
क्योंकि इनकी यॉर्कर और साथ स्विंग जब ये करते थे तो अनप्लेएबल होते थे। स्पिनर को वापस लाया गया मोहम्मद हफीज को पवेलियन एंड से, जो अब इंजमामुल हक कहलाता है, इंजमाम के नाम से मंसूब है ये पवेलियन। नो बॉल, ये बहुत ही दिलचस्प है। ऑफ स्पिनर मोहम्मद हफीज जो मुश्किल 2-2.5 कदम से चलकर बॉलिंग करते हैं, उन्होंने नो बॉल की। कभी भी इनको नो बॉल करते हमने देखा नहीं है ज़ैनब। इंटरनेशनल क्रिकेट पे इन्होंने, अभी हमारे दोस्त मजहर अरशद ने बताया कि कभी नो बॉल नहीं की, एटलीस्ट इन इंटरनेशनल क्रिकेट। दैट्स हाउ गुड ही इज बीन। जनरली बहुत एक्यूरेट हैं, एक्शन के ऑब्वियसली इश्यूज होते रहे इनके ओवर द इयर्स, बट इकोनॉमिकल भी हैं, विकेट्स भी ले लेते हैं, रन्स भी, और बोल्ड कर दिया। लेकिन ये शुमार नहीं होगा बोल्ड। लेकिन फ्री हिट। इस बार तकरीबन खुद को यॉक करा लिया था, क्रीज में खड़े खड़े रह गए। बिस्मिल्लाह, कोई नुकसान नहीं हुआ। लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट के एक फील्डर दायरे के अंदर हैं, करना चाहते थे और शायद अंपायर से ये वाइड बचाना चाहते थे। विकेट कीपर बॉलर की इस अपील का मकसद यही था, लेकिन ज़मीर हैदर ने वाइड का इशारा दे दिया। आसानी के साथ बाउंड्रीज नहीं मिल रही, जरा परेशान नजर आते हैं बिस्मिल्लाह हफीज के सामने, क्योंकि वन डाउन बैटिंग करते हैं। जब आप इस पोजीशन पर आते हैं T20 क्रिकेट में, तो वन डाउन बैट्समैन को वर्सटाइल होना चाहिए इस फॉर्मेट में। अगर बाउंड्रीज आसानी से ना मिल रही हों, फिर आप 1-2 करते रहें। यहाँ पे ऑब्वियसली कप्तान का जो है रोल और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो उनके साथ बैटिंग भी कर रहे हैं, उनको इनकरेज भी करें, एंड बहुत टैलेंटेड है, कदमों का इस्तेमाल, लेकिन पीछे फील्डर जो है मौजूद है। जी हाँ, ख्याल यही था कि स्पिन के साथ जाएं, लेकिन मोहम्मद हफीज़ ने स्पिन गेंद को किया नहीं। 50 रन मुकम्मल हुए। बलोचिस्तान ने 2 विकेटें गंवाई हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि उनके कप्तान हारिस और नायब कप्तान बिस्मिल्लाह इस वक्त विकेट पर मौजूद हैं। और ये बहुत ज़्यादा ख़राब गेंद थी, इसे फाइन लेग बाउंड्री का रास्ता दिखा दिया। ज़्यादा अच्छी बॉलिंग नहीं। हफीज़ काफ़ी अरसे के बाद किसी बड़े मैच में बॉलिंग कर रहे हैं, रस्टी लगे। जी हाँ, कंट्रोल उस तरह से नज़र नहीं आ रहा। इनका कंट्रोल नॉर्मली बॉल पे बहुत अच्छा होता है, नॉर्मली विद इन विकेट्स, स्टंप टू स्टंप इनकी बॉलिंग होती है, तो बड़ा मुश्किल होता है इनको हिट करना। लेकिन अभी ऑब्वियसली काफ़ी देर से बॉलिंग कराई नहीं इन्होंने। एक और चैरिटी रन विकेट के दोनों तरफ, पहले बाउंड्री फुल टॉस पे, अब ऑफ स्टंप के बाहर वाइड गेंद। ऐसे ही है जैसे कि हमने डिस्कस किया, कुछ आउट ऑफ टच सुकत है, नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन वो होता है ना कि जब आपकी मैच प्रैक्टिस नहीं होती तो शायद उस तरह से आपका रिदम भी नहीं बनता। ओवर के इख्तिताम जो है वो हो चुका है, 56 for 2 in 7 overs। इमामुल हक 9 और वैसिया 26 रन आज बना सके। 2019 के नेशनल T20 कप के चैंपियन बैट्समैन थे वैसिया। लेफ्ट आर्म स्पिनर आ गए हैं आसिफ अफरीदी बॉलिंग करने के लिए मीडिया सेंटर एंड से। लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, डीप कवर, फील्ड के साथ उनने ये आर्मर फेंका, स्किप करती हुई बैट ऑफ बैट। आई थिंक आइडिया यही था कि पेस अटैक तो इनका वैसे ही तगड़ा है, उस्मान शनवारी हैं, वहाब हैं, शाहीन हैं, तो थोड़ा स्पिन इंट्रोड्यूस किया जाए टीम में।
सिर्फ चेंज ऑफ पेस के लिए, थोड़ी सी पेस कम होगी तो शायद एक आध विकेट भी मिल जाए। कल से इस पिच का काफ़ी जिक्र हो रहा है, बल्कि पिछले 3 दिन से अभी वजीर खान भी यही कह रहे थे कि ज़्यादा रन्स बनने की इस टूर्नामेंट में जो बैट्समैन की हुक्मरानी रही है उसका सबब ये पिच है मुल्तान की, जिसमें गेंद बल्ले पर आ रही है। लेकिन एक और पहलू भी है काबिल गौर जानिब कि बॉलिंग भी इतनी अच्छी नहीं हुई। पंजाब की जो दोनों टीमें हैं, सदर्न पंजाब सेंट्रल पंजाब, दोनों की बॉलिंग कमज़ोर है। तो पहले मैच में जो केपी ने बॉलिंग की थी उसका अगर जिक्र ना ही किया जाए ज़्यादा तो बेहतर होगा। जी हाँ, जैसी भी पिच हो, लेकिन आपको एक अपना कंट्रोल लूज़ नहीं करना चाहिए। और उसके अलावा जब इस तरह की पिचेस हो, हमने डिस्कस किया इस तरह आपको स्लोअर बम्पर्स, बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वंस, वेरिएशंस जिसको हम कहते हैं, वो लाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अब आइडियल मौका है, अगर एक और मिल जाती है, अपील और आउट दे दिया। टूर्नामेंट का पहला LBW, अभी तक हमने LBW देखा ही नहीं है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। और उसकी वजह यह है कि मोहम्मद हफीज़ की तरह ही आसिफ अफरीदी भी विकेट टू विकेट बॉलिंग करते हैं, ज़्यादा जगह नहीं देते। बिस्मिल्लाह खान फिर स्वीप करने चले गए थे, पिछले ओवर में उनके खिलाफ अपील अंपायर ने मुस्तरद की, और इस बार भी स्टंप्स के बिल्कुल सामने थे और गेंद रोल के वाज़े तौर पर नीचे लगी, बिल्कुल साफ साफ आउट थे। कैसर वहीद का ये अच्छा फैसला, 58 पर तीसरी विकेट गिरी। बिस्मिल्लाह अपनी कल की कारकर्दगी नहीं दोहरा सके, 16 रन पर आउट हुए। इमरान भट्ट आहिस्ता आहिस्ता पहुँचे हैं प्लेइंग एरिया में। ये भी ओपनिंग बैट्समैन है। इस टीम में आपको इस बैटिंग लाइनअप में 5 स्पेशलिस्ट ओपनर मिलेंगे। सिर्फ जो मिडिल ऑर्डर स्पेशलिस्ट बैट्समैन हैं वो कप्तान हैं इस टीम के हारिस सुहेल, जो 3 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। ज़्यादातर बैट्समैन आउट ऑफ पोजीशन खेल रहे हैं बलोचिस्तान के लिए। जी हाँ, शाहीन शाह ने जो शुरू में प्रेशर अप्लाई किया है उसका फ़ायदा अब बलोचिस्तान उठा रही है। पहले भी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि वन ऑफ द मेन बॉलर्स, उनको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है लेनी पड़ेगी। स्पिन करने की कोशिश नहीं कर रहे आसिफ अफरीदी। और आजकल की जो T20 क्रिकेट है, हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पिनर जो है अपने स्पेल के शुरू में एक आध गेंद स्पिन करता है, उसके बाद फ्लैट बॉलिंग करना, तेज़ बॉलिंग करना चाहता है। ये एक ट्रेंड है T20 का। आई थिंक अगर बॉल थोड़ा सा स्किड कर जाए या ड्रिफ्ट अगर थोड़ी सी मिल रही हो तो LBW का चांस काफ़ी बन जाता है, जो कि हमने देखा है। यहाँ रन आउट का चांस था, एक रन लेना चाहते थे इमरान भट्ट, उन्होंने तकरीबन अपने कप्तान के पास से होकर वापस गए। देखिए थ्रो बिल्कुल सही एंड पर था, लेकिन बर वक्त वापस चले आए इमरान। बाल बचे, 8 ओवर्स मुकम्मल हुए, 59 पर 3। .3 इस वक्त रन बनाने की औसत है। इसे बेहतर करना होगा क्योंकि इससे पहले 4 मैचेस हुए हैं, पहली इनिंग्स का कम से कम स्कोर 180 रहा है।
ये बलोचिस्तान ने बनाया था कल सिंध के खिलाफ, मैच जीत लिया था। इनकी बॉलिंग काफ़ी बेहतर है, स्ट्रेंथ है इनकी बॉलिंग, और अच्छे कप्तान भी हैं हारिस सुहेल। मोहम्मद मोहसिन आ गए लेग स्पिन करने के लिए, अच्छे बॉलर हैं मोहसिन। बड़ा तबाहकुन स्पेल किया था फैसलाबाद में 2019 T20 टूर्नामेंट के ओपनिंग मैच में, 4 विकेटें ली थी। मुर्तवा शॉट खेला और आसिफ आफरीदी के गेंद सामने गिर गई। अच्छी कोशिश की थी आफरीदी ने। थोड़ा सा शॉर्ट फील्डर से आके पड़ा है बॉल, लेकिन काफ़ी क्लोज था और यहाँ पे अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं आसिफ आफरीदी। थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता एक बार फिर से उनको टेक ऑन किया और फील्डर जो है क्या कट ऑफ कर लेंगे। हाँ जी, कट ऑफ कर लिया फील्डर ने। अच्छा एफर्ट मोहम्मद हफीज़ का इन द डीप। ज़्यादा वक्त हफीज़ जो है दायरे के अंदर गुजारते हैं एक्स्ट्रा कवर पोजीशन पर आजकल, लेकिन इस बार बहुत ही उम्दा आउटफील्डिंग मोहम्मद हफीज़ की। उनकी फिटनेस बहुत बेहतर हुई है। इंग्लैंड के दौरे में लगा था, T20s में जिस तरह बैटिंग करते रहे, बैट कैरी करते रहे पाकिस्तान के लिए, अच्छी फॉर्म भी दिखाई। अच्छा साल गुजरा है मोहम्मद हफीज़ का। जब मोहम्मद हफीज़ की टाइमिंग अच्छी हो, जिस तरह से हमने देखा था इंग्लैंड के खिलाफ भी, तो विजुअल्स ज़बरदस्त होते हैं उनके बैटिंग वाइज। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी हमने देखी है इनकी ओवर द इयर्स। यूजफुल ऑलराउंडर रहे हैं और फिटनेस अपनी इन्होंने बरकरार रखी। एक और गुगली, पिछली गुगली कदरे स्लो थी, इस मरतबा तेज आई। इस मौके पर स्लिप में कोई फील्डर खड़ा करने में मुजायका नहीं है। रिजवान जिस तरह की बॉलिंग करते हैं लेफ्ट हैंडर को, मोहम्मद मोहसिन स्लिप खड़ी कर सकते हैं। विकेट के मुतालिक सोचना चाहिए। अच्छा रिकॉर्ड है लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ मोहसिन का। शानदार ओवर मुकम्मल हुआ जिसमें 3 रन दिए 62 पर 3। (62 for 3) बलोचिस्तान इस वक्त थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। प्रेशर अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे। एक एंड से शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, कुछ क्रूशल विकेट्स हासिल किए हैं और आसिफ अफरीदी जो हैं कीपिंग थिंग्स टाइट। उनको कोई रूम नहीं दे रहे, मारने के लिए मुश्किल हो रहा है बल्लेबाजों के लिए। इस बार कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे लेकिन देख लिया आसिफ अफरीदी ने, फ्लाइट में उन्हें बीट किया। ये फाटा से आते हैं आसिफ अफरीदी और इससे पहले मुल्तान में खेल चुके हैं 2018 में T20 चैंपियनशिप फाटा के लिए। अच्छे क्रिकेटर हैं, बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, पिंच हिटिंग भी करते हैं पावर प्ले में जाकर। यूजफुल क्रिकेटर इस तर्ज के क्रिकेट में। T20 में ऐसे ही क्रिकेटर्स जो हैं बड़े कामयाब होते हैं, जो कि बैटिंग भी कर सकें, ऑलराउंड एबिलिटीज हो जिनके पास। कदमों का इस्तेमाल, हवा में गेंद, फील्डर दौड़ते हुए बॉल के नीचे, लेकिन शॉट। और एक मरतबा फिर वो जो गेंद की परवाज थी उसी में ही तकरीबन मात दे दी कप्तान हारिस सुहेल को, जो कि आज इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं लग रहे। काफ़ी देर से विकेट पर, तकरीबन 26 मिनट से हैं, 5 रन बना सके हैं। ये भी अच्छा शॉट नहीं था। उनकी टीम रन रेट में सब पीछे दिखाई देती है, विकेटें भी 3 गिर चुकी हैं, तो दबाव साफ झलक रहा है इस बैटिंग लाइनअप पे। रिजवान विकेटों के पीछे हमेशा की तरह इंतहाई मुतहर्रिक,
बात भी कर रहे हैं मुसलसल। मेरे ख्याल से बहुत जल्द वो हमें शायद कमेंट्री में नजर आए, जितनी उनकी कमेंट्री बिहाइंड द स्टंप्स हमने देखी है इंग्लैंड की सीरीज में। बड़ा एंटरटेन किया है इन्होंने सबको। जहाँ इसमें कोई खिलाफ नहीं, इंग्लैंड में जो इन्होंने विकेट कीपिंग की, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के दौरे में विकेटों के पीछे जो इनकी कारकर्दगी थी, इनका फुटवर्क, इनका ग्लव वर्क, राशिद लतीफ़ और वसीम बारी के बाद हमने एक ऐसा विकेट कीपर देखा है इतनी नीट गेम को टेक करता है। ये कोई इतना अच्छा आइडिया नहीं है बार बार इनको क्रीज से बाहर निकलना। आसिफ आफरीदी ये बहुत ही चालाक बॉलर लग रहे हैं। 10 ओवर्स मुकम्मल हुए, 66 पर 3। Out. 66 for 3, and halfway through the stage now. Still a spin in operation from the far end. Things have slowed down, yes, after the loss of the two openers. It gave them a fairly good start. And then now the wicket of Bismillah Khan. So keeping things under watch here, KPK. And I'm being joined, or we have been joined by Shehzad Mohammad, who's just come to Multan. Welcome to you, welcome to the National T20. Thank you, Sikander. It's good to be over here. I'm excited to see this tournament live. These middle overs right now, it's good to see how tight Asif Afridi and Mohammad Mohsin are trying to bowl. They're 3 wickets down right now, but these are those middle overs where if they build on a partnership, then Balochistan can end this next 20 overs, next 10 overs right. Shorter length, cut away, and a bit of a hand onto that has helped the sweeper cover to collect this easily. A couple of runs added to the total. Haris Sohail has been out there for a while, but 18 deliveries for just 8 runs. Not really been able to launch himself. Oh, that's a good shout. That is a good shout, but the umpire feels otherwise. He's slogging that, just getting down on one knee, hit him high on the thigh. That was close. Imran Butt tried to take a calculated risk right there, try to get a quick boundary, but Zamir Haider stayed adamant at the same time, Sikander. So these are those overs right now that Haris Sohail maybe has to now pick up a few boundaries to get the momentum shifting, because he came in when Shaheen Shah Afridi was on the hat-trick ball, and got to give credit to him because he just put Balochistan under a lot of pressure. Mighty lucky on that occasion. Both these teams are winless in the tournament at the moment, but it's just the start of the day. They're both playing their second match. Lost their first. So this contest will give them a boost. Surely you need those 2 points to stay in the tournament, to stay in the game. Maybe both teams are a little bit rusty, but at the same time, the season just got started. And Multan is a place where batsmen get runs quickly, because the outfield is so quick that if any batsman now gets in that momentum and starts getting run in the start of the season, I'm sure that these 2 points will matter a lot for both teams, but it's an early season. A bit of concern would be this partnership, 13 of 19. It's the middle overs. You don't want to really slow things down and make it tough for the batsman to come. At least a runner ball, get that odd boundary going somewhere, so that when you reach the 15-over mark, you've got as many wickets available as you have now, and then you can launch yourself in the last 5. Coming down the wicket, but still not getting hold of it. Right, Sikander, someone will have to shift gears over here. One will be the X factor who might change the game, because the top order failed today. So let's see how they do. It's 72 for 3 after 11.
refreshing drink. It's fairly warm here in Multan, but just cools down tremendously by the time sun sets. But we haven't seen any changes in terms of captains wanting to bat first. There's no due factor, there's nothing wanting to chase under lights. There's only one game where we've had a chasing team winning the match. Otherwise, 3 games have been won by sides batting first here. Balochistan doing the same, winning the toss. Pulling that one slightly short on the back foot, but again, same issue, Imran Butt. It's not quite getting that desired timing that he's looking for. The ball slow, things has been slowed down by Rizwan, rightly so. So they're looking to use more muscle power to get the ball to the boundary. He's taken the pace off, and that's what he's learned from the first game, Rizwan. More pace attack and more runs are coming, which is why he's opted for a spinner in place of Junaid Khan today. It's good to see. It's been a wide and a wavered ball right there, but it's good to see how Asif Afridi has bowled very tightly. Now he's not giving them much room to maneuver with, and yes, they came under pressure, but they're doing pretty well right now. One of the players, Haris or Imran Butt, will maybe have to take a risk right now to change gear, change momentum, get some runs on the board. So when they do, that was close. Almost got run out there too, Sikandar. Those got a stick. It was his stronger arm. Was hit very hard. Probably he's got it on the wrist rather than on the palm. Oh. Yeah, just got fingers to that. Yes, an opportunity to run the non-striker out as well. Beautiful shot. That was a beauty. He's staying so calm, Sikandar. Like Haris knows he's under pressure right now. He's not gotten boundaries like this, but right now, seeing that kind of shot, he's staying composed. He doesn't want to throw his wicket away just because there's been a lot of dot balls. But these fours are just taking some calculated risks. He's going to improve on it. This is how the partnership gets built. So they're taking their time, but now it looks like something is about to change. That's in the air, but that should clear the field easily. So now shifting gears here, Haris Sohail. A boundary and a 6, just attacking the bowler a bit. It's a good ploy. Been quiet for a while now. That's the first 6 of the day, of day 3 of the National T20. So yeah, things have not really been that flourishing or fireworks. This is the first one. And we'll probably see more of them. Well, Sikandar, that's the old school Sialkot 1-2 punch. Shoaib Malik has been great with this, and Haris Sohail and Shoaib Malik are very close together. And if a bowler is going to bowl short, you can hit it for a cut. You can use your crease and go for a big hit. Next ball. Nicely played, looking for a double. Nope. That's the over they needed, Sikandar. They got some runs over it. Looks like the run rate is improving finally. Last ball of the over. Now it's Imran Butt's turn. End of the over. It's 81 for 3. That's your batting for you. If you look at that, Shazad, the start was fairly good. Whereas Zia is one of those you get you a good start, get a couple of boundaries going in and over. After they were dismissed in the same over, yeah, that got a bit of scare going on in the Balochistan camp. So things were a bit slow when Bismillah and Haris were batting together. Bismillah was given LBW, the first LBW decision up till now in the tournament. And since then, it's all in front of us. The last over, the previous one, a boundary and a 6, the first 6 of the day. So realizing the fact that we are 12 overs down, 85, this is a good batting track. 200 plus is a winning score, so you need to now shift gears. You're at 7.1 at the moment. You can achieve 10 plus in the last 5 overs, you're in the game.
Well, Sikandar, runs on the board always matter. They always put so much pressure on the team that's batting second. They brought Wabriaz into the attack right now. With all this experience he has, he always brings this energy into the ground. The bigger the stage, the better he performs. And now noticing that he just bowled 1 over for 1, this is the time where one of the two batsmen's there, they build a partnership. It's slow, but they're working hard. But one of them will have to take him on. And that's how you know that, because you got two explosive all-rounders down the order in Ahmad Butt and Umaid Asif that can come and make a change and make a difference real quick. Let's see how this starts. Making room, just clearing that inner circle. Got protection at deep point. Riaz has got that experience to mix it up. He understands what's required of him. He understands what's required in the conditions that are there, which is very evident that you've got to bowl into the stumps. Here, anything outside the off-stump width is going to cost him, cost the team. We saw Sohail Khan did very well yesterday. Mixed it up, slower bouncers, back of the hand ball, quicker one, Yorkers. Keep the batsman thinking. I like how Imran Butt is staying composed. He did not get a good start last match. He's trying to give himself maximum time to make an impact this time. So Wabriaz is not trying to give any room. If they're going to get some room, they're going to slash their bats hard at it. So just trying to stay wicket to wicket, bowl to the field is important. It's just 12th over right now. Maybe both of them are going to try to still play like this, try to get an odd boundary for a couple of more overs. So the last 6 overs that are left, you can see they got some wickets in hand. It's nice of them to make this comeback after being an early start. Shaheen Shah Afridi being on a hat trick. So yeah, just a couple of more overs before we'll see some more 4s and 6s hopefully. Oh, I almost got it back to Wahab Riaz. Surprise bounce there. I think Aris did well. Stood tall on his toes and just made sure he plays with soft hands. But that did surely surprise him. That slingy action, he did not expect that. It's like how Musa yesterday bowled that bounce to Suhail Maksud. He was just coming on that front foot. So these fast bowlers in this domestic circuit are charged up. They're rested. They had a nice little tour of England. They're coming back. They know they have to make an impact for their team in the start of the tournament. So you can see Wabriaz bowling right to the money. This time moves away and just opens the face. It's a good thing as a batsman when you suddenly realize something is bowled very well at you, especially a sharp rising delivery. You take your bottom hand off, almost like a reflex. That helps you not hitting the ball anywhere close to the fielders. It's pretty spread out field at the moment, understanding that we're getting into the last quarter of the innings. And Wahab wants to contain runs here, keep that pressure on. Quick single, direct hit would have been good, but the misfield allows them to go for a single. I'm liking how Sikandar, like how Haris Sohail had an uncomfortable start, but just because he let the flow of the game come to him, he's got a few boundaries. Now he's almost getting run a ball, and he's still at the crease. Now that's danger, and that's that momentum shift that I was talking about. That if he ends this over right, they have 2 good overs, and they've played well. So Imran Butt, maybe next over they're gonna get going. But Wabriaz has a good. He has 2 overs to go, Sikandar, after this. He's gonna bowl those Yorkers. He's trying to go through, maybe finish this over right. Just wants to get it right. He's got a deep mid wicket. Now he's moving him square, almost like a deep square leg. He's got a very wide, deep fine leg. And he's got that guy at long one inside the circle. And that bouncer comes in. That's the Wahab Riaz we know. End of the over. 89 for 3 after 13.
to the previous over, just 4 runs of it. Wahab is really making sure that he doesn't repeat what happened in the first game that KPK played. Usman Shinwari has changed ends. It's a bit expensive in the previous over. He bowled 3 boundaries. There's a different batsman now here. But having said that, I'm pretty sure that Balochistan will have this in mind. That they need to attack someone out here, get maximum runs off him. Could be Usman's over. Usman changing ends now. He'll be bowling to Imran. This could be the change of course for either side in terms of momentum. As we get into over number 14. You're right. Usman has been under pressure. 2 overs, 24 runs is gone. They can target him. They know that he hasn't bowled the last 2 overs too well. So a good start. Maybe first, second ball, they can take a risk. Straight away pulled. And that will earn him a boundary. Quick outfield. Yeah, it's still a little too short. It's allowing the batsman to get on the back foot and then get that run on the onside, so square of the wicket. It was a beautiful shot by Imran. And it's not a no ball. But you can see by Usman's action and his intensity when he's running to bowl. Like, he usually follows through more forward. You can see by his rhythm that he's trying to struggle, he's trying to push himself. So maybe when he's going to get that rhythm into his bowling, he's going to finish stronger, follow through better. Maybe he's going to get that zip that he needs. One thing's for sure, they will target him. Try to get as many as possible. Get a boundary of the first ball. You've got the bowler thinking. He's coming round the wicket now. Short ball again, pulled away. Got protection. Did well to keep it down as well. Didn't get the gap. Rizwan would be happy to see in the 14th over, still no 3 figures on board. You don't want to lose that intensity right now, because we saw that yesterday with Southern Punjab. They were looking good, they kept their opposition quiet, but then Northern just freed their arms and got 35 odd runs in the last 2 overs, and that was probably the margin of defeat in the end. It's very important to finish off well, finish your over off well, finish the innings off well. Momentum shifts quick in this game. It's all about the running between the wickets, looking for that quick single, trying to get that double at the same time. And when that one boundary in the start of the over comes, it puts automatic pressure onto the bowler. He's picked that. That will clear the fielder down at long on by a mile. So he just rocks back slightly and gets underneath the ball and gets maximum here. This over 2 now getting a slightly expensive a boundary and a 6 here. 100 up for Balochistan. He bowled that ball in the slot. He was ready for it. You're not supposed to bowl that length ball, especially at this time in Multan, when all you have to do is just pick it. It's a beautiful ground. You get good runs, good shots that you play. You get maximum runs for it. Usman has been under pressure. It feels really hard there. But is down. It looks like he's getting some cramps. It is nice and hot and humid out there, Sikandar. Well, middle way through, looks like Wabraz has been the most economical bowler. And right now, just six bowlers have been tried. Shaheen up there with 2 wickets for just 12. He's been the key who got them that opening, got the 2 openers. Rizwan has kept these bowlers nice in check. It's nice how both Wahab and Shaheen both have 2 overs there. He's going to follow the wickets. Imam got stuck at the crease. He was trying to leave and trying to play. That was a beautiful catch by Wahab. The first ball was Shaheen Shah with that celebration. A straight one cross, and that was right in the middle. Easy decision, nice, well bowling by Asif Afridi. But after that, you could tell how Balochistan revamped their inning,
at the same time, they just knew that they needed to build a partnership. Once they get that partnership, they're in a good stage right now. Unfortunately, Imran was down with maybe some cramps, it looked like. But last 6 overs to go. Usman Khan Shinwari under pressure. There's still three balls to go, Sikandar. There's been a short break in concentration. Hopefully, Haris Sohail stays focused, tunnel visioned, and ready to go. 28 of 28. He's gone back on track. It's a slower one. Back over the wicket, Usman Shinwari. Sikandar, I'm loving how both bowling sides, now they got the spearhead fast bowlers and KPK, and then at the same time Balochistan got 2 really good spinners. Both a little bit different kind of leg break bowlers, and I'm talking about Osama and Yasir Shah. But it's a nice contest. They are relying on their fast bowlers, and Balochistan are going to rely the middle orders on their spinners. Yep, 2 leg spinners were played by them. 2 very different leg spinners. One is 6+ in height. Gets that extra bounce. And the other one we all know about, Yasir Shah, how good he is. They've got a fair mix. Variety is available. Whereas I've seen KPK, they have a battery of fast bowlers. But they've left out one, Junaid Khan, today, and they've opted for a left-arm spinner, Asif Afridi. And he started this tournament nicely. Usman knows the wicket was a little bit slow in the middle, and he's showed his experience today. What I'm liking is seeing Imran Butt's determination, leading run scorer in the 4-day circuit last year. Second game in, I'm sure he's worked really hard, and he's staying there. He's staying gritty even through these cramps. Fuller slower and earns him a wicket here. Trying to make room, Haris Sohail, and suddenly realized that he's way too far away from the ball. Managed to get some bat onto it, but no control of shot. And that is a good wicket. So you'll just forget about the 6 and the boundaries that were hit. You get a wicket and you get a big one, and you get the praise. Nice and easy catch by Shoaib Malik. Change of pace has been working for Osman, but I don't know how he's feeling right now. It looks like he's a little bit dehydrated. The celebration after the wicket right now. Haris Sohail gone for 29 off 30. Most experienced batsman in the lineup is here. Usually top of the order has a new role, playing at number 6. Imran Farad, I'm talking about all his experience playing, all that experience leading last year's Balochistan's team. Now the good start, he's played all these matches in Multan. He scored runs over here. He knows exactly what's about to happen next. Good start by Mohsin, let's go. And that looks like a big hit, and that is a boundary. A full, nice and juicy full toss. Imran Butt is about to get going. All this pressure on Mohsin right now by bowling a loose ball first off. Yeah, you'd get pulled up by your dugout if you don't hit those. That was a freebie. And with that 6, 10 more trees will be planted by PCB and Tuck in this effort to plant more trees and make the country greener. Every 6 will 10 more trees in Pakistan. Mohsin is struggling with a little bit with his line and length. You just look at the wicket right here. Nice slow ball, nice change of pace, and easy catch. A short third man.
Imran's always been a new ball player. Coming down at number 6. It's a different scenario for him. He likes space on ball. And of course, that circle limit allows him to free his arms. Very good, powerful hitter. It's good to see Rizwan's leadership. He's always been one of the most fittest and hardworking players in the circuit. But how he shows his cricket IQ and how he's staying calm and he knows what he wants from the bowler is remarkable right now. He's launched himself into that one. That should be a maximum again. 10 more trees from PCB and Tuck. Now we are seeing those big hits coming. Suddenly, the top gear has now been achieved by Balochistan, and they're going after the spin at the moment. What a beautiful shot by Imran, but freeing his hands, read the pitch really well right now. Second big hit for the over. He is going really well right now. He needs to finish he needs to come not out. And just with that, almost big appeal. But Zamir Haider said no. That's the over. And that's 114 for 4 after 15. पंद्रह पे 4 इमरान भट्ट पीस पे। इमरान भट्ट ने पिछले ओवर में लगा ऐसे कि गियर चेंज किया है। 2 की कॉल है कि नहीं, शाइन बॉल तक पहुंच के नहीं ना। हम तो आखिरी 5 ओवर रह गए, 116 पे 4 हैं। 180 कल बस बार ही बचे, लेकिन अब 116 पे 4 क्या एक्सपेक्ट करें? कितना मतलब 160 तो होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। बलूचिस्तान ने स्टेडी पार्टनरशिप्स बनाई, लेकिन जिस तरह का T20 का शिफ्ट गियर था वो हमें देखने को नहीं मिला। अब थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। एक बात ये ज़रूर है कि केपी की जो बॉलिंग पोटेंशली, जो अगर आप देखें शाहिन शाह अफरीदी, वहाब रियाज, शनवारी, उसमें अगर आप हफीज़ को ऐड करें तो बड़ी एक्सपीरियंस और ऐसे T20 टॉप क्वालिटी बॉलिंग है। और जो पहला मैच वो खेले तो ऐसा लगा कि बहुत ऑफ डे था, तो उससे उस मैच के बाद बेहतरी ही आनी थी। उससे बुरा मेरा ख्याल वो परफॉर्म नहीं कर सकते थे। एक तरह से कह सकते हैं कि डिज़ास्टर थी उस टाइम पे, क्योंकि 4 आपके टेस्ट बॉलर्स थे, उसके बावजूद आपके पास 2 और ऐसे बॉलर्स स्पिन डिपार्टमेंट में थे जो बहुत एक्सपीरियंस रखते थे। लेकिन जिस तरह का स्टार्ट हुआ वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। और शायद अब बॉलर्स भी इस टूर्नामेंट में वापस आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें देख लिया है कि किस किस्म का पिच है और किस किस्म की शॉट्स लग रही हैं। टैक्टिक्स में आपको कुछ लगा कि शायद स्टोर रन्स अब ज़्यादा एम्प्लॉय हो रही हैं? बिल्कुल, इस विकेट पे जितना फ्लैट ये विकेट है, एक बैटिंग ट्रैक है, और जिस तरह की आउटफील्ड है, ये हम हर रोज़ बात करते हैं, लाइटनिंग आउटफील्ड है। इसमें आपको बहुत प्रिसाइज होना पड़ेगा अपनी लाइन लेंथ के साथ। आप प्रिडिक्टेबल नहीं हो सकते एज अ बॉलर, क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। वेरिएशंस ट्राई की जा रही हैं, लाइन ऑन लेंथ जो है वो विद इन विकेट ज़्यादा रखी जा रही है। इमरान फरत ने ऑफ साइड पे थोड़ा सा अपने आप को रूम दिया और मेक श्योर किया कि उनके आर्म्स फुली एक्सटेंड हो बाउंड्री। इस स्टेज पे इस तरह की लेंथ देना शिनवारी मेरे ख्याल महंगा पड़ सकता है, जो कि पड़ा है। थोड़ा सा आउटसाइड ऑफ टर्म था, और जो बात अभी हम कर रहे थे कि जो चीज़ भी आउटसाइड ऑफ टर्म जिस भी बैट्समैन को मिली है, ही मेड श्योर कि वो बाउंड्री के लिए या मैक्सिमम के लिए गई है। इट्स काइंड ऑफ अ फ्री हिट इस तरह की विकेट पे, और अच्छी इंटेंशन इमरान फरद की, फ़ायदा उठाया। मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं बलूचिस्तान को आइडिया है कि उन्हें एक अच्छा टोटल पोस्ट करना है अगर वो डिफेंड करना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं। फिर से ऑफ स्टंप से बाहर और फिर से वही रिजल्ट। बहुत जबरदस्त टाइमिंग इमरान फरद की।
तरह से रीप्ले बॉल थी शिनवारी की। इस टाइम पे ये लेंथ देना सुसाइडल है। और इमरान फरद की अगर मैं बात करूं, बहुत अच्छी तरह टाइम किया, प्लेस किया अच्छा गैप में। उनके लिए एक तरह से लूजनेस है इस टाइम पे इनिंग्स पे। और जिस तरह का शिफ्ट चाह रहे थे, एक्सलेट करना चाह रहे थे बलूचिस्तान, वो इस तरह की बाउंड्रीज में अब उनको मिल रहा है। शिनवारी के स्पेल का आखिरी बॉल 48 रन दे चुके हैं, एक्सपेंसिव फिर से। इमरान फरद ने ट्राई किया लेकिन इस दफा नाकाम। शिनवारी विकेट ले ली इन्होंने अपनी लास्ट बॉल पे। इमरान फरद एक और चौका मारना चाहते थे मिड ऑफ के ऊपर से, टाइमिंग नहीं हुई और शाहीन शाह अफरीदी ने कैच पकड़ा। थोड़ा सा रिलीफ केपी के लिए। फाइनली शिनवारी ने विकेट हासिल करके कहीं ना कहीं पिछली 2 बाउंड्रीज का एक तरह से गुनाह साफ कर लिया। लेकिन थोड़ा सा लालची हो गए थे इमरान फरद। ऑप्शन बुरी नहीं थी, मिड ऑफ सर्कल में था, लेकिन उसको अच्छी तरह टाइम नहीं कर सके। पवेलियन वापस लौटना पड़ेगा बलूचिस्तान को। एक और झटका, इमरान फरद 10 रन बना के आउट। इमाद भट्ट आए हैं इमरान फरद की विकेट के बाद। वहाब रियाज ओवर करेंगे। मसला डायलेमा यही होता है कि अब क्योंकि फ्रेश पिच है, क्योंकि हम हिस्ट्री देखें इस टूर्नामेंट की तो रन्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, टारगेट क्या सेट करना है। अमूमन ये प्रॉब्लम होता है जब आप पहली बैटिंग कर रहे हो कि आपने ये देखना होता है कि कंडीशंस के मुताबिक कितना स्कोर साजगार रहेगा। और टीम वही अच्छी होती है T20 की जो उस डिसीजन को जल्दी अप्लाई कर ले और ये जांच ले कि आज जो कंडीशंस है उसके मुताबिक एडजस्ट हमने बैटिंग किस तरह करनी है या जो स्कोर सेट करना है वो कैसे करना है। हमारे लिए तो बड़ा आसान है, हम आके कहते हैं जी 200 स्कोर, लेकिन जो खेल रहे हैं उनको ज़्यादा पता हो। 1 रन के लिए अच्छा टैप किया। पिच डिफरेंट लग रही है और ऑब्वियसली हर विकेट जो है वो प्रीवियस विकेट से डिफरेंट होती है। उस तरह जिस तरह हमें पिछले 2 डेक पे देखने को मिला है कि बॉल अच्छा बैट पे आ रहा था, इस पे थोड़ा सा वो चेंज है। और वही बात मैं सेकंड करूँगी कि बैटर्स को ज़्यादा बेहतर आइडिया हो रहा है, बॉलर्स को बेहतर आइडिया हो रहा है कि ये विकेट, इस विकेट पे कितने रन्स डिफेंडेबल हैं या नहीं, और उसी सिचुएशन को अप्लाई करना चाहिए। इमाद भट्ट भी काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, हिटिंग कर लेते हैं। और मरीना पिच रीड करना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो पिच को एग्जैक्टली रीड कर लेते हैं। मेरे ख्याल जो हम लोग पिच रिपोर्ट करते हैं, अगर वो मैच के बाद चलाई जाए तो सब लोगों को पता चल जाए कि हम कितने पानी में हैं। सिर्फ मेरे ख्याल अभी इस कमेंट्री बॉक्स में एक आदमी ऐसे हैं जो दूर बैठे पिच का हाल बता देते हैं, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस है हमको। उनका नाम मैं लेता हूं तो वो नाराज़ होते हैं, लेकिन तारिक सईद साहब सुबह ही बता देते हैं कि इस पिच पे इतना स्कोर होना चाहिए और अमूमन वो ठीक ही होते हैं। तारिक सईद साहब की तो नज़र कमाल की है और फुल शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन पेस की वजह से थोड़ा सा बीट हुआ, सही टाइम नहीं कर सके। पिच रीडिंग वाकई आसान नहीं, और हम लोग जनरली एक आइडिया होता है कि अगर घास नहीं है, फ्लैट ट्रैक है, तो बहुत अच्छी बैटिंग पिच होगी। थोड़ा सा घास है तो बॉलर्स की आंखें चमकनी शुरू हो जाती हैं। आप तो मरीना हमें लिफ्ट नहीं कराती मैच के बाद, काफ़ी हम जाते हैं खाना खाने तो वेटर्स
आके पूछते हैं। तारिक सईद से ज़्यादा सवाल होते हैं, टिप्स वो उन्हीं से लेते हैं कि कल के मैच में कैसा होगा। लेकिन क्वालिटी ये है कि वो हर किसी को बताते हैं, ऐसे नहीं है कि वो नहीं बताएंगे। मज़हर अरशद से भी सवाल होते हैं लेकिन वो अमूमन गलत स्टैट्स बताते हैं, हमें भी कभी कभार गुमराह करते हैं। शॉर्ट बॉल, लेकिन खुशकिस्मत रहे हमाद भट्ट, 2 रन मिले। 133 पे 5। अठारह बॉल रह गए बलूचिस्तान की इनिंग्स में। शाहीन शाह अफरीदी को वापस लाया गया है। आज केपी काफ़ी सेटिस्फाइड होंगे अपनी बॉलिंग परफॉर्मेंस से। रिजवान भी कुछ थोड़े से खुश लग रहे हैं, ऑल्डो रिजवान कभी नाराज़ नहीं लगते, लेकिन पहले मैच के बाद काफ़ी परेशान लगे थे कि इतनी अच्छी बॉलिंग, इतनी टॉप क्लास बॉलिंग के बावजूद परफॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन आज मेरा ख्याल ऐसा लगा है कि जो हम केपी से एक्सपेक्ट कर रहे थे उनकी बॉलिंग लाइनअप से, वो आज वो डिलीवर कर रहे हैं। आज इनकी बॉलिंग में एक प्लानिंग नज़र आ रही है। पिछले मैच में कहीं ना कहीं प्लानिंग मिस थी। चाहे आपके पास टॉप क्लास वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हों, अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है तो आप किसी भी डेक पे फेल हो सकते हैं। आज एक अच्छा क्लियर प्लान बॉलर्स का और रिजवान का नज़र आ रहा है। सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर रहे हैं, बॉलर्स अच्छे चेंज किए, बैटर्स के हिसाब से लेफ्ट हैंडेड हैं, ऑफ स्पिनर्स लगाए। एक काफ़ी आज वेल ऑर्गेनाइज टीम लग रही है। और सीधा लॉन्ग ऑन की तरफ और एक और विकेट। तो बेहतर से बेहतर होता जा रहा है केपी के लिए। इफ्तिखार ने कैच पकड़ा, शाहीन शाह की एक और विकेट। बेहतरीन बॉल थी, फुल लेंथ थी, विद इन विकेट्स थी, अंडरनीथ नहीं जा सके, सिर्फ एक चिप कर दिया और इजी कैच इफ्तिखार के पास। शाहीन अफरीदी का जितना एक्सपीरियंस है और जिस तरह की फॉर्म में वो हैं और एज ए बॉलर जिस तरह इवॉल्व कर रहे हैं, स्पेशली एट द डेथ इनिंग्स आप कह सकते हैं, उनका सारा एक्सपीरियंस यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी रिसेंटली इंग्लैंड से खेल के आए। अमाद भट्ट वापस पवेलियन की तरफ जाएंगे, 4 पे 4 रन बनाए। यासिर शाह, देखना यह है कि आखिरी 3 ओवर में आया कि बलूचिस्तान इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मगर जिस किस्म की बॉलिंग शाहीन शाह अफरीदी कर रहे हैं, बाउंड्री ऑप्शंस बहुत लिमिटेड। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे थे तो शाहीन शाह अफरीदी ने फुल बॉल किया, जो कामयाब हुआ। मरीना, आपने प्लान की बात की और जबरदस्त बॉलिंग। प्लान के साथ एग्जीक्यूशन भी हो रही है। अगर आपने एक फील्ड सेट की हुई है और आपने बॉल उसके मुताबिक नहीं कराया तब भी आपके लिए नुकसान है। लेकिन आज जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज और माइंड सेट बलूचिस्तान के बॉलर्स का है, उसका रिजल्ट आपके सामने। केपी के बॉलर्स का, बलूचिस्तान इस वक्त थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। पिछले मैच में भी 180 डिफेंड किया लेकिन काफ़ी करीब मैच किया। और यासिर शाह भी पवेलियन की तरफ वापस। शाहीन शाह अगेन
फुल बॉलिंग कर रहे हैं और बहुत मुश्किल है उनको कि सामने हिट लगाई जाए। सेम वे ऑफ गेटिंग आउट, यासिर शाह भी चिप करना चाह रहे थे, मिड ऑफ सर्कल में था, लेकिन अगेन लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, फुलर लेंथ थी और ज़्यादा रूम नहीं मिला यासिर शाह को। शाहीन शाह को सारा क्रेडिट जाता है, एक और विकेट हासिल की और डक पे यासिर शाह, बलोचिस्तान का एक और नुकसान। उमैद आसिफ आए हैं, 7 विकेटों का नुकसान हो चुका है बलूचिस्तान को। शाहीन शाह अफरीदी 4 आउट कर चुके हैं और इनका ये तीसरा ओवर, तो 5 के चक्कर में तो ज़रूर होंगे, ये 6 भी आउट कर चुके हैं हैम्पशायर के लिए। ऑलमोस्ट 5वीं विकेट, ऑलमोस्ट रन आउट भी, तो पूरी तरह से शाहीन शाह अफरीदी इस गेम पे हावी। मरीना पश्तो समझ आती है आपको? निष्ठा। रिजवान पीछे से बोल रहे हैं कि स्टंप्स में क्यों नहीं बॉल किया, तुम शॉर्ट बॉल क्यों कर रहे हो, जबकि आप जब आगे बॉल कर रहे हो तो आपको विकेट मिल रही है, तो ज़रूरत ही नहीं है शॉर्ट बॉल की। और बिल्कुल वही करने की कोशिश, स्टंप्स में बॉल राउंड द विकेट से, कोशिश यही है कि बॉल स्टंप्स में फिनिश हो। थोड़ा सा लेग साइड पे चला गया बॉल। 18 ओवर 136 पे 7। शाहीन शाह अफरीदी 4 विकेटें। बलूचिस्तान इस स्कोर कार्ड से खुश नहीं होंगे। ऑप्शन अच्छा है, पेस यूज करें, लेकिन थर्ड मैन काफी फाइन लिया हुआ है। हालांकि इमरान भट्ट की कोशिश थी कि ये कीपर के ऊपर से, ऑलमोस्ट कीपर के ऊपर से, बल्कि फर्स्ट स्लिप के ऊपर से बॉल किया। अच्छा ऑप्शन था, बाउंड्री ऑप्शन जो ट्राई किया इन्होंने, रैम्प शॉट। वहाँ रियाज से एक्सपेक्टेड था कि फुलर लेंथ कराएंगे अच्छी पेस के साथ, लेकिन वो रिजल्ट हासिल नहीं कर पाए जिसकी तलाश में थे। मुश्किल होगा बलूचिस्तान के लिए, क्योंकि शाहीन और वहाब के जितना एक्सपीरियंस है T20 का, इतने आराम से रन नहीं बनने देंगे। ऑलमोस्ट वहाब रियाज को भी विकेट मिली, लेकिन उमैद आसिफ का खूबसूरत शॉट राउंड द विकेट से। वहाब अमूमन यॉर्कर करते हैं, थोड़ा सा मिस हुआ यॉर्कर, और उमैद आसिफ काफ़ी केपेबल हैं सामने बाउंड्रीज मारने के। अच्छी शॉट थी, फील्डर सर्कल के अंदर था। बाउंड्री ऑप्शन एक और थी जो उन्होंने अवेल की इस बार, पिछली दफ़ा हासिल ना कर सके। थोड़ी सी फ्रैक्शन लेंथ जो है वो पीछे पड़ी, वो आपकी यॉर्कर ट्राई किया था। लकी रन फॉर बलूचिस्तान। दो की कॉल है और 2 रन हो जाएंगे। मरीना, मेरा तो मतलब टेम्परामेंट नहीं है कोचिंग का, तो मैं ये सवाल आपसे करता हूँ कि पिछले मैच के बाद मेरा तो दिल है कि मैं उधर बैठा होता, जब इनकी टीम की मीटिंग अगर हुई है तो मैं बैठा होता, तो क्या कोच ने क्या इनको बताया होगा या क्या बात की होगी कि एकदम पूरी चेंज होगी, बॉडी लैंग्वेज भी, बॉलिंग भी, फील्डिंग भी, सारा कुछ। शॉर्ट बॉल इस बार, लेकिन सबसे पहले तो अकाउंटेबिलिटी हुई होगी, क्योंकि जितने बड़े नाम हैं और जिस तरह की परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी वो नाम उस परफॉर्मेंस के साथ।
और मेरा ख्याल है कि मेन चीज़ जो मुझे डिफरेंस नज़र आ रहा है वो हर बॉलर का प्लान आज क्लियर माइंडेड के साथ कि किस फील्ड के साथ किस टाइम पे क्या चीज़ एग्जीक्यूट करनी है, वो केपी का इस बार नज़र आ रहा है। हर बॉलर के समझ आ रही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आज बॉलिंग की जा रही है, लूज बॉलिंग नहीं है, कैजुअल नहीं है, बॉडी लैंग्वेज आज फील्ड में अच्छी है। तो जिस तरह की डिफीट केपी को मिली है, वेकअप कॉल थी इतनी बड़ी टीम के लिए, और आज उन्होंने उस चीज़ को जो है रिटेन किया। और एक और विकेट, पॉइंट पे बड़ा जबरदस्त कैच। साहबजादा फरहान सामने डाइव करते हुए, सबसे मुश्किल बात वही होती है जब सामने डाइव करनी हो। स्लोअर वन, बल्ले का बाहरी किनारा और खूबसूरत कैच। मॉडर्न ब्रेक क्रिकेट में ये हाफ चांसेस आपको अवेल करने पड़ते हैं, और बहुत खूबसूरत कैच फरहान का। और बलूचिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 144 for 7। अच्छी इनिंग्स इमरान बट की, 37 बनाए, लेकिन फिनिश लाइन तक नहीं जा सके। और जो एक अच्छा डिसेंट टोटल बलूचिस्तान एम कर रहा होगा पहले बैटिंग करके सेट करने का, वो कहीं ना कहीं अब डगमगाता नजर आ रहा है। उसामा मीर ज्वाइन करेंगे उमैद आसिफ को। इस्तफा डीप स्क्वायर लेग की तरफ, और बॉल बाउंड्री की तरफ चली गई। सूरज को ब्लेम कर रहे हैं, बॉल उनको नजर नहीं आया, लेट रिएक्शन। ये हमने कल भी देखा था ऐसा एक मौका, ग्लासेस भी नहीं पहनी हुई, तो वहाब रियाज को समझ नहीं आ रही कि ये कैसे हो गया। ऐसे हुआ कि सूरज था, उन्होंने ग्लासेस नहीं पहनी हुई थी, उनको बॉल नहीं नजर आया और बॉल बाउंड्री की तरफ चली गई। 148 पे 8। रिएक्ट बहुत लेट किया तो चांस नहीं था कैच करने का। आखिरी ओवर, आखिरी 6 गेंदें रह गई हैं और शाहीन शाह अफरीदी यही देख रहे हैं कि ये 3 जो स्टंप्स हैं इनको मैंने कैसे उड़ाना है। बोल्ड का इनको बहुत शौक है, हमने तो ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वहाब रियाज ने पिछले ओवर में कामयाबी हासिल की। अच्छा कैच था और बॉल भी अच्छी थी, डिपिंग यॉर्कर था। शाहीन दोबारा 6 विकेटें अपनी हासिल कर सकते हैं जिस तरह की बॉलिंग वो कर रहे हैं, और टेल एंडर्स के लिए काफ़ी वेरिएशंस हैं उनके पास। इस वक्त तो यॉर्कर ही वो कर रहे हैं, मेरे ख्याल ये उन्होंने सोच लिया है कि वेरिएशन अगर स्लोअर वन भी होगी तो बिल्कुल मैं यॉर्कर लेंथ पे ही करूंगा। शायद थोड़े डिसअपॉइंटेड इसलिए हैं कि ऑफ स्टंप से बॉल थोड़ा सा बाहर हो गया। 3.2 ओवर्स, 4 विकेटें, 16 रन, मतलब T20 में इससे बेहतर, खैर इन्होंने तो 6 भी आउट किए हैं तो इससे बेहतर हो सकता है। पाकिस्तान की सॉइल पे अब वही फिगर्स जो है वापस हासिल करना चाहिए। और चांस है 5वीं विकेट का, और 5 तो हो गई। फखर जमान ने कैच पकड़ा, शाहीन शाह अफरीदी की 5वीं विकेट, वापस जा रहे हैं स्टार्ट पे, उनको पता है कि 6ठी भी लेनी है। तैयार हैं 6ठी विकेट हासिल करने के लिए। शानदार बॉलिंग शाहीन अफरीदी की, जिस तरह T20 के लिए इन्होंने अपनी बॉलिंग को इवॉल्व किया है, हैट्स ऑफ टू हिम।
5 पर T20 में हासिल करना इस तरह की विकेट और इस तरह की आउटफील्ड पे आसान नहीं है। ये बताता है, आपको रिफ्लेक्ट करता है कि किस कैलिबर के बॉलर हैं शाहीन अफरीदी। Iron Man has to go back. आकिफ आए हैं बैटिंग करने, लेकिन स्ट्राइक पे उसामा मीर। शाहीन शाह अफरीदी 5 for 16 यॉर्कर की तलाश में। ऐसे नहीं, छठी विकेट पे विकेटों में बॉल करो। शाहीन शाह क्या कर रहे हो? आपका यॉर्कर तो सिर्फ विकेटों में जाता है, और शाहीन शाह को भी ये पता है कि 3 में यॉर्कर कर चुका है और विकेटों में नहीं लगी। आधे इंच का डिफरेंस होगा शायद विकेटों से, लेकिन छठी विकेट की तलाश में 2 गेंदें बाकी हैं। निशाना बांधेंगे विकेटों का। निशाना तो बांधा, लेकिन कामयाब बैट्समैन हुए। उसामा मीर की बहुत ही जबरदस्त लॉफ्टेड ड्राइव। देखिए मार्जिन फॉर एरर कितना छोटा है। अभी हम बात कर रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी का यॉर्कर अगर 1 इंच विकेटों में होता तो उनकी छठी विकेट भी होती। 5 आउट कर चुके हैं और हर विकेट शानदार। उसामा मीर ऑलमोस्ट गोल्फ शॉट थी ये, बहुत अच्छा स्ट्रेट हिट लगाई, 4 रन हासिल किए। गिफ्टेड 4 रन फॉर बलूचिस्तान, लेकिन शाहीन अफरीदी के अब दोबारा 6 विकेटें हासिल कर पाएंगे? इसका जवाब हमें इस बॉल के बाद मिलेगा। और शॉर्ट बॉल, शाहीन शाह अफरीदी सिर्फ 5 ही आउट कर सके, 6 आउट ना कर सके, लेकिन 5 for 20। मतलब ये हुआ कि बलूचिस्तान सिर्फ 152 रन बना सके अपने 20 ओवरों में। टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया और शानदार कमबैक केपी के बॉलर्स का। एक अच्छी टीम नजर आई, रिस्ट्रिक्ट किया इस तरह की विकेट और आउटफील्ड पे उन्होंने एक क्लियर प्लान लगा, लेकिन बलूचिस्तान अब इसको डिफेंड करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 152 टोटल बनाए। शाहीन अफरीदी द मैन स्टैंडिंग आउट ऑफ द लॉट, 20 रन दे के 5 विकेटें 4 ओवरों में। T20 के लिए एक शानदार बॉलर बन गए। आखिरी 4 ओवर में सिर्फ 26 रन बन सके, तो क्वालिटी और स्किल जो हम केपी की बॉलिंग से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आज नजर आई। और एक दफा फिर एक नाम जो आजकल बहुत तरक्की कर रहा है वर्ल्ड क्रिकेट में, शाहीन शाह अफरीदी। 2 मैच पहले इन्होंने 6 आउट किए थे, आज 5 आउट किए। लग ऐसे रहा था कि दुनिया के पहले फास्ट बॉलर हो जाएंगे जो 6 आउट T20 में 2 दफा करें, लेकिन फिर भी बहुत ही शानदार बॉलिंग। 37 इमरान बट के, लेकिन इस स्कोर कार्ड को देखते हुए बलूचिस्तान कुछ खास खुश नहीं होंगे। कोई एक बड़ी इनिंग या एक तेज इनिंग नहीं हुई। वैस शाह 24, हारिस सोहेल 29, इमरान बट 37, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग लाजवाब। 20 ओवर 152 पे 9। हफीज ने बॉलिंग स्टार्ट की। शिनवारी की 2 विकेटें, वहाब रियाज की 1 विकेट, आसिफ अफरीदी की 1 विकेट, लेकिन सुपरस्टार इस बॉलिंग अटैक के शाहीन शाह अफरीदी 5 विकेटें और सिर्फ 20 रन। तो पहली इनिंग मुकम्मल हुई और टारगेट 153 का, और थोड़ी देर में हम वापस आएंगे वो चेस देखने के लिए।
Okay. 19 रन देकर एक विकेट हासिल किया अफरीदी ने। इसके अलावा जो आखिरी बॉलर थे मोहम्मद मोहसिन, 3 ओवर्स में उन्होंने 22 रन किए। तो इस तरह से ये बॉलिंग एफर्ट। और अब मुझे ज्वाइन किया है कमेंट्री में हमारे प्रोड्यूसर जनाब जावेद नज़ीर ने। जी बहुत शुक्रिया मुनव्वर सामिन। जैसे कि आप जानते हैं कि टारगेट है 153 और खैबर पख्तूनख्वा को ये बलूचिस्तान की टीम के खिलाफ जो टारगेट मिला है वो बहुत ना होने के बराबर एक तरह का टारगेट है। आज अगर हम बलूचिस्तान की बैटिंग साइड देखते हैं तो उसमें सिर्फ हारिस सोहेल जो है 29 स्कोर कर सके और अम्माद भट्ट जो है 37 स्कोर करके टॉप स्कोरर रहे हैं। बॉलिंग साइड पर अगर नजर डालें तो जिस तरह आपने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी ने आज कमाल किया और ये बहुत अच्छा कम बैक है टीम का कि टीम जो है वो इतनी अच्छी कंडीशन में वापस आई। पहले मैच की बनस्बत आज सीनियर्स ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया जिसमें वहाब रियाज और हफीज का जिक्र ना किया जाए तो उनके साथ नाइंसाफी हो गया। आज दोनों बॉलर ने भी अच्छी बॉलिंग की और वहाब रियाज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। अपना पूरा स्पेल जो है उन्होंने बड़े पुरअतमाद तरीके से किया और आज जिस तरह उन्होंने पहले नो बॉल्स की लाइन लगाई थी आज वो नो बॉल्स भी उन्होंने नहीं की और अपने फुट पर अपने पैरों पर बहुत काबू रखा और अपने रनअप को बहुत सही तरीके से वो जांचते रहे। शाहीन शाह अफरीदी ने शुरू से ही बैट्समैनों को Anybody have a foggiest idea of what restart time is? Yes, no, maybe? Greeties, greeties. Can you tell me what time of day when the last ball was finished bowled? Please tell me. Look, see that time of day there? What? Well, you need to do that. That's crucial that. Well, here's the time here. 5, 4, 3, 2, roll. Bismillah Khan hit a couple of boundaries, a couple of freebies were also delivered. But then tried to turn one to the leg side, which was straight enough. And things just didn't take off after Haris Sohail threatened with some lovely shots down the ground. A huge 6 as well, placed spin well. Big total with Haris Sohail in this kind of form, but the slow one made sure that he didn't get a lot more Imran, but hit a few big hits. That probably the best of them. Imran Farah decided that it was time to just tee off, and he played a couple of gorgeous shots through the offside, but Shinwari got his man when he attempted a third boundary in the over. And from then on, it was all about Shahin Shah Afridi. First getting one too long on, getting a wicket there with that length. Jasir Shah tried to hit him down the ground. He was caught. And the innings sort of stuttered big time after that. Umayyad Asif hit a boundary of Wahab Riaz, then Imran Butt outside edge, straight to point. But bowling was high quality from KP. And they made sure that there was no big finish for Balochistan. Shahin Shah Afridi got 5 wickets. Balochistan in the end got maybe a below par 152. So you would think that KP would be very happy with their bowling performance. Balochistan not so with their batting. Imran Butt top scored with 37, 29 for Haris Sohail, but not the kind of score you would have expected. 152 for 9 of the 20. Bowling was spot on from KP. They looked to get their mojo back, but Shahin Shah Afridi, 4 overs, 9 dot balls, 5 for 20. And that made sure that Balochistan, in the end, got to 152 for 9. And when we come back,
it will be the run chase back on. खिलाते हैं यही फर्क हमें आज नजर आएगा क्योंकि एक लो स्कोरिंग मैच होगा और अगर पावर प्ले के जो 6 ओवर हैं वो फखर जमान सही तरह यूटिलाइज कर लेते हैं तो ये शायद आसान मैच हो और ये आसान मैच हो 14 से 15 ओवर के दरमियान भी खत्म भी हो सकता है डिपेंड करता है बिल्कुल आमतौर पर इस नेशनल T20 कप में हमने देखा है कि टीमें 60 या 70 रन बनाती हैं पावर प्ले में और यहीं से थोड़ा पीछे रह गए थे बलोचिस्तान वाले और इमामुल हक जो कि पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर है वनडे फॉर्मेट में 7 सेंचुरियां बना चुके हैं उनकी मायूसी हुई है कि वो मुसलसल दूसरे मैच में और इमामुल हक के लिए ये ग्राउंड और यहाँ के विकेट्स जो है वो बिल्कुल नई नहीं है क्योंकि उनकी प्रैक्टिस जो है वो सुबह शाम जब वो टीम के साथ नहीं होते तो ये मुल्तान में होते हैं और वो प्रैक्टिस के लिए अपने इसी ग्राउंड को तरजीह देते हैं और यहीं पर आकर वो अपनी नेट प्रैक्टिस भी करते हैं और अपनी फिजिकल ट्रेनिंग भी वो यहीं पर आकर करते हैं मुनव्वर ये मैच दूसरी इनिंग्स अब चंद दिनों बाद ही शुरू होने वाली है क्योंकि मैं बाउंड्री लाइन So match 5. The chase about to begin. Balochistan got 152 of the 20. Umpires ready. Fist pumps and all. Team talk, which will be, I reckon, quite severe because I don't think they got enough runs. KP was right on the money, right on the ball. And after the first 20 or the first half of the game, I think the one team that will be better off or happy will be KP. Shazer, if you watched that first game that KP played, they were very lackluster, a huge comeback in terms of their bowling and their fielding. Well, KP is going to look for a good start today, Bazir. I mean, they have two really good openers who want to make a mark and change Fucker, and you got at the same time, looks like Rizwan is opening today. So, just seeing if they take on the power play in the first 6 overs, if they have a good start, that's all they need. 150, 160 is a tricky score usually, because you got that 7 to 8 runs per average. But just a good start with wickets in hand, they can cruise control from there. Maybe they're 40 runs, in my opinion, short, Balochistan. But they don't have extreme firepower pace bowlers. They're going to rely on their spinners and a little bit of experience from Ahmed Asif, who bowled really well at the death overs in the last game. He kept his nerves in control and he finished the game strong. So let's see how this goes. It's a must-win for both of them if they want to be on the board. Multan, view from high up above. Some people get problems with height. I'm one of those. I wouldn't want to be standing there and looking down. Thankfully, technology now, you don't even have to go up. You just remote control everything. Rizwan, well, he's promoted himself up the order. I think this is a good move. I think Rizwan in T20 cricket should be batting as high as possible. If there's a number which precedes
opening, I think he should bat there. But Rizwan himself, and then obviously Fakhr Zaman will provide the impetus at the top of the order. They want him to get into form. Of late he's not been in the best of forms, but we know that he's a game changer. We know that once he gets going, doesn't waste much time. But the challenge here for him, which I think he'll quite like, is pace on the ball. Akif does get the ball to shape, but Fakhr likes pace on the ball rather than pace off. So we're ready. Akif. And there you go, straight away. Pace on the ball, width, and a boundary to start off the innings. Fakhr Zaman, the front foot killer, always stays on that front foot. Anything you're going to get him wide of the crease, wide length, he's going to throw both his hands at it. What a beautiful start for him. We know that he gets his runs quick. He plays fearless cricket, and this is exactly the start that KP wanted. Akif is a little bit inexperienced, but is an upcoming extreme fast bowler, so he has to maybe finish this over right, just the first ball. Let's see what's next. Exactly the start that Fakhr wanted, exactly the deliveries that he wanted outside the off stump, freeing his arms, back-to-back boundaries. Shot of the day for me. I mean, he is freeing his arms, the wicket is looking even better, the pitch, and Akif is showing a little bit nerves right there. So what a start for KP, 2 balls, 2 fours. I'm sure he's feeling good, Fakhr, right now. He's feeling very confident about the start today. And the problem that Akif does have is Fakhr is very good with any width, and if anything, the ball's shaping away from the left-hander. The ball that troubles Fakhr is the one that's attacking the stumps or coming back in. He has to get tighter or make the ball swing back in. Until and unless he gets tighter, it's going to be the same result over and over again. 3 in a row. Batting practice for Fakhr Zaman right there, it looks like, Basit. Like throwdowns when you want to feel good before you go into the innings, trying to play on that cement. That's how Multan with these boundaries are looking right now for Fakhr. What a beautiful shot. That's how you want to start off. 3 highlights with 3 balls. Yeah, now straight away, Fakhr is off to a flyer, and straight away Akif is under extreme pressure. Yeah, take time off the game, just have a chat. Haris will doing exactly that. But again, the problem with Akif with the new ball is the fact that ball is going to swing away from Fakhr, whatever. So you really have to try and target those pads. He's reinforced the offside field though. The same length, but this time around he gets away with it. Well, we know that it's very difficult with the new ball to actually go straighter with that angle, but I think they're playing with fire. They've gone to a strengthened offside field, so he now has to stay away from the leg side completely, but that's actually playing into Fakhr's strength. All Fakhr is trying to do right now is just watch the ball, stay concentrated, stay confident. And that was right under that bat too, Basit. Akif is such a raw talent that only 2 years ago, when I was playing first class for Karachi, I remember Mr. Kabir in the department 4-day tournament brought him into the nets. And that was when he just came through. He was so raw and pure and fast that he's come a long way. Experience will only come with time. When he's going to make those mistakes, he's going to get better with time. But it's a good start. He's playing these matches. He seems confident. He seems fired up. Hopefully he can end the over right. Three boundaries followed by 3 dots. It's 12 without loss.
Mohammad Rizwan opening the innings, promoted himself up the order. It's been a perfect start for KP in this game. Yeah, they're soaring high. KP is soaring high. That drone is soaring high. Just don't want either of those to come down now. Umaid Asif, well, they need wickets. They need wickets in clusters. They need quick wickets, because if they don't do that early on, I think the game is dead and buried straight away. And starts off with a delivery down the leg side, and Rizwan likewise gets a boundary to start his innings. Doesn't it feel good? First ball for down tickle down the leg side. Umaid Asif looks a little bit stiff. 2 days, 2 games on. But what a start for the leader. Man of the tournament last year, Mohammad Rizwan. Leading from the front today, captaining the side, and batting change, I guess, will work for him. He just wants to feel a little bit more balls on bat. We've already had 4 boundaries in the space of 7 deliveries. And the required run rate now will come down to 7, really. And we've seen so far in this tournament that the only way that you can defend a target is to get wickets consistently. And once I'm saying that it's not a huge total just on the history of the last couple of days. And I'm saying that because of the quick outfield and the true wicket. So they need to get wickets consistently, but importantly, they need to start off with the new ball getting wickets. If Fakhar Zaman plays the power play, or if Rizwan gets set, then it'll be very, very difficult to crawl back. If they continue like this, game over for Balochistan in the first 6 overs only. Umaid has to maybe find some tricks up his sleeve and bowl a few dot balls to build up that pressure. But it doesn't look right now. They have gotten 4 boundaries within the first 9 balls of the inning. Not an ideal start for Balochistan, exactly how KP wanted to get started. And all Fakhar has to do is continue on. And continue on, he does. Another boundary, short and dismissed from his presence. 5th boundary of the innings. Beautiful shot by Fakhar. Usually what happens is when you get balls like this, bowlers are under pressure. But you know, when you're hitting 4 boundaries within the first 2 overs, your eyes light up. You feel very confident. My grandfather used to always say at this time, you know, watch the ball even more closely, because it is your day. You got in the start that you wanted, but you have to also capitalize on it. No. The ideal start for KP. But Shahzad, the ideal side for you as well. Today, you come up to the coast and you said you'd come in your own car, and I was wondering, Karachi is quite far off. And then I realized that not only are you a first-class player, but you're a very, very decent trainer. So the 6-pack, if you drive 18 hours, it helps. I think you can elaborate in the next over, because right now Rizwan gets another boundary. It's all boundaries in the first couple of overs. 26 without loss. Fakhar and Rizwan just dealing in boundaries. And KP off to a rollicking start. 26 without loss. First couple of overs. Akif now packed offside field. Fakhar Zaman's already hitting for 3 boundaries in that first over.
Coming back to that trip, what, 18 hours from Karachi? Actually, no, just 9 hours actually. So 9 Multan hours. was not that far. It was actually a very smooth drive. What I would liked it, I was excited to come see National T20 like with my own eyes. I was watching the matches on TV or on my smartphone. Now, being over here, being in Multan, it has really good memories for me. But I wanted to see, since my cricket season is also here, I wanted to... Akif is bowling his second ball. At the same time, this was a swing and a miss. Fakhar Zaman look in the same mood right now. Well, back to topic what you were saying, Bazit. Honestly speaking, these 9 hours is good rest for me since I've been training in the morning. I've been getting ready for my 4-day season. I'm playing for Sindh right now. But at the same time, I wanted to see all these bowlers firsthand. I wanted to see how beautiful this tournament is looking. Got to give PCB a lot of credit for this, only because there's so much social media marketing involved now. People all over the world are tuning in, talking on WhatsApp groups, talking everywhere that they're loving the fact that there's cricket back in town. And now we want to, because the lockdown caused a lot of things. It's good to have cricket back on TV, something to focus on. Fakhar Zaman hits this through the onside. Another boundary. It's been raining fours in this, well, 2.3 overs. This Fakhar Zaman's 5th boundary. Fakhar Zaman feeling bold and beautiful. He's just getting balls under bat and it's going straight into the fielders. I'm just watching it going to the boundary. Being over here, and I understand any one run, if it's crossing the fielders, you're going to get big runs over here only because you get boundaries even on the shots that you play singles and doubles on. Yeah, you mentioned the fact that it's a beautiful tournament. You mentioned the fact that Waterall has gone into the tournament and it's been progressing beautifully. The cricket that's been played is high quality. The only thing on social media is that the commentators are getting a lot of flack. They're really being under the pump. Thankfully that you're here, that maybe they'll back off. But otherwise, we've been getting a lot of flack. The greatest asset that we have is that the saving grace that we have is Tariq Said. He's the only one who's been told that he's been brilliant. Sikandar Bakht, well, he's hit and miss, but the others have been criticized a lot, and rightfully so. Well, it's honestly been an honor for me seeing all the matches you guys cover on PSL and all these past tournaments. You guys bring such good excitement to it. I'm happy I'm part of it right now. See, Akif Bazit has some extreme pace. And maybe it was nerves in the start, but he's trying to fire it up, bowl it quick. I'm sure he's been told by the experienced Imran Farhad how to bowl right now. Listening to your experienced players under pressure comes a long way. Shoaib Malik used to do that a lot when we used to play first-class cricket together. Always speaking to the bowler, being on mid-on or mid-off, right after every ball, just so they know that Shoaib Malik is there. Experience matters, and that way they can control the nerves and bowl better. Short ball, well, it's pulled away and a misfield, so guess what? Another boundary. 3 gone at 35 without loss. Rizwan and Fakhar just dealing in boundaries so far. And 35 without loss, chasing 152. So everything going KP's way. It's been magnificent with the ball. Shaheen Shah Afridi was absolutely awesome. He got 5 wickets. Disappointed that he didn't get 6. I think that's not good enough because he would have become the first fast bowler ever to do so in T20 cricket. Yasir Shah, well, he'll have to bowl out of his skin, maybe repeat what Shaheen Shah Afridi did, because right now the game's just rolling away from Balochistan.
You're so right. Yasir Shah, who's won many matches for Pakistan with all his experience that he's bringing to the table right now. Not an ideal start for Balochistan from any angle, but a wicket here can change the game. They build a partnership, but bring that number 3, bring that number 4 in. Balochistan maybe has to show a little bit more energy on field. There's no crowd today, unfortunately, but Bismillah Khan knows how to hype the whole team up. A very good wicketkeeper. At the same time, to get a start right now, maybe they will have to find some energy together. Come on, Shaji. Come on, Yasir bhai. Come on. Come on, Yasir bhai. Come on, boy. This should be quite interesting. It's because Fakhar Zaman is not going to hand back, and it is the power play, and Yasir Shah, Fakhar Zaman, well, this is a battle which will be super interesting. The boundary options are down the ground for Fakhar. Now sedately takes a single, maybe just giving respect to his fellow teammate. Now it's Rizwan, so it's all a Pakhtun affair right now. Rizwan, Fakhar Zaman, Yasir Shah. Bragging rights are on the table, Bazir. I mean, they all know each other so well. They're friends. Yasir Shah is playing for Balochistan, but playing each other for so long, all these years, being part of camps together, they know exactly. Maybe they can have all these calculated risks because they know maybe what Yasir Shah is going to bowl. But in this situation right now, all KP has to do is just go cruise control and just finish this game off. 6 overs, power play looks pretty good right now. But Yasir Shah has made a nice start. First 3 balls, no boundary, bowling straight on the money, in the middle, using years of experience. Rizwan is a great leader, very mature. He knows that all he has to do is bat through and see the team to victory. Beautifully timed through the offside. Time and time again, it's like a broken record. We've said that the outfield's lightning quick, but just the timing on that, he's placed it through the gap, and once he does that, there's only one result. Look how beautifully he timed that ball. He knew that Yasir Shah is bowling right in the middle, so he gave himself some room, saw it's a little short. All he had to do was put bat on ball, and the outfield did the rest. There's always a single on offer because mostly in the power play, the inner circle is on that outer point of that inner circle. So if you just even hit it to them, not smash it to them, just hit it to them, there's always a chance of a single because they're hanging back, trying to protect that boundary or trying to give themselves as much space as possible to be able to do that. Short and just a single. Fakhar Zaman will think he missed out, but KP haven't missed out on the first 4 overs. It's 42 without loss. Yeah, economy rates not so flash. There have been plenty of boundaries in those first 4 overs. Imad Butt bowled well in that previous game. That's some vantage point, social distancing. Yeah, one of those ones, the better commentators. He's got much more to say. Maybe his voice as well, which not too bad with his voice, but I don't know why he would want to watch the cricket rather than explore Multan. Anyway, Imad Butt does tend to get wickets, does tend to get the ball. We saw in the previous game, got the ball to swing.
If you can do that to Fakhr Zaman, get the ball to swing back in, he's in with a chance. As you see, there's nobody trying to close off on that single. Everyone coming from the ring, they're trying to give, I mean, all they have to do is play smart cricket right now. It was a tap and a run. They both have good understanding, good chemistry between each other. They know where those singles are for. And all they have to do is just play smart, use their cricket IQ right now, and have a nice power play. 4 overs in, 43 for no loss. Ahmad Butt is not express pace. He has all this experience, all this variety. He likes to bowl mainly wicket to wicket. But right now, maybe a mistake. Maybe Rizwan wants to take him on right now. A mistake here will maybe put Balochistan a little bit back in the game. But in this time, they need to build on some energy, Balochistan. Single down to deep square leg, and with all these boundaries going on, I lost my train of thought. And I think you said 9 hours you took from Karachi to here, so just remind me that I should never be sitting with you. You probably come at 180 kilometers per hour. I reckon there's no speed cameras involved there. Anyway, you don't have to answer that. You know, I don't want you to be in trouble. But the way that KP are batting, they're going at 180 kilometers per hour as well. Before this tournament, a lot of people, including myself, thought that KP was the side to beat, was a side packed with terrific bowling and experience in the batting order as well. First game, I think that was a blip. That was a performance which they've got out of their way. I think now they'll come back into their stride, and it's looked today as if they found their mojo. All that wise experience, Bazid, with Shoaib Malik, Mohammad Hafiz, backbone in the middle. Mohammad Hafiz having a great tour of England, getting to play, and just, it was just boom, boom all over the place. They just knew that, you know, they've nothing that they have not seen in the cricket ground yet. They stay calm, they got their own superstitions, but just to see how Hafiz showed all his passion, man on a mission, ready to perform even at this stage in England. Right now, KP's had such a beautiful start. They've, even in the middle order right now, it'll be a tough task for Balochistan to get back with seeing Shoaib Malik, Mohammad Hafiz about to come in with the dynamic opener Farhan, who's now maybe playing down the order a little bit. So tough task for Balochistan. They got to pray for a miracle wicket maybe right now. Will change things up, change momentum maybe. Go on, Ahmad Butt. Gets that desired result. Fakhr Zaman flashing outside the off, some extra bounce. Does for him. That ball kicked, and that's the miracle I was talking about. Ahmad Butt with the breakthrough of Fakhr Zaman. Beautiful catch by Bismillah. Maybe this is the time where the team can unite, talk about how they want to go about the next 2-3 overs. Beautiful catch by Bismillah. Safe hands, nice and agile. Fakhr had a beautiful start to this tournament, this match especially. You must be feeling gutted. 25 of 19. Nice strike rate by Fakhr. 44 for 1. Professor Mohammad Hafiz walks to the crease. Started off the innings with the new ball. He's here because Ahmad Butt with the new balls getting some extra bounce, which did for Fakhr Zaman.
Bismillah Khan did the rest. Good catch, but they need plenty more. And there's plenty more to come with the bat for KP. Good thing is that the slip is in place. Good decision by the captain. Ahmad Butt feeling ambitious with this slip. Maybe all you know, before Hafiz gets in, getting a wicket this first ball. I would put really Balochistan right into it. A first ball wicket right here. But Mohammad Hafiz, cool and collected. Been here before, been here, done that. Ready to leave a mark again on this tournament with all his experience. Last ball of the over. All Hafiz is thinking right now is to watch this ball. His eyes are nice and bright and wide, ready to go. Successful over by Ahmad Butt. It's 5 done, 45 for 1. So this is how it looks. 5 overs, 45 for 1. 45 से खिलाड़ी आउट और अच्छा स्टार्ट मिला है। फखर जमान ने इनिंग्स की पहली 3 गेंदों पे 3 चौके लगाए, आउट हो गए हैं अभी वो 25 बनाकर, लेकिन एक मोमेंटम हासिल हो गया है यहाँ केपी को और इतना बड़ा टोटल भी नहीं है जो चेस कर रहे हैं। तारिक साहब आ चुके हैं हमारे साथ और अब क्रिकेट की बात होगी क्योंकि पहले 5 ओवर तो काफ़ी बातें हो गई। जी हाँ, और एक फील्डर को स्लिप में भी बुला लिया इमरान फरहत को। जरा हैरत हुई कि जो अम्माद भट्ट थे, कल उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी नई गेंद के साथ। आज उन्हें देर से लाया गया। पहले ओवर में उन्होंने विकेट फखर जमान की ले ली, लेकिन 42 रन उस वक्त तक बन चुके थे और बलूचिस्तान पर दबाव आ चुका था। उनको जल्दी लाया जा सकता था। हमने देखा है कि फील्ड में बहुत ज़्यादा तब्दीलियां नहीं करते हैं ये कप्तान हारिस सुहेल, लेकिन बॉलिंग में तो करनी चाहिए आपको। कुछ चीज़ें बलूचिस्तान के कैंप की थोड़ी सी, मैं क्वेश्चनेबल वर्ड तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ी सी सरप्राइजिंग ज़रूर रही है। जैसे कि इमरान फरहत 6 नंबर पे आ रहे हैं, एक जेन्युइन ओपनर है, नया गेंद खेलते हैं, तो कितने करामत साबित होंगे डाउन दी ऑर्डर, हैं पावर हिटर। इसी तरह बॉलिंग में अभी आपने जिक्र किया, थोड़ा स्ट्रगल रहा थ्रू आउट बलूचिस्तान की अपनी इनिंग्स में। ऐसी विकेट पे जिसने पहले दिन काफ़ी रन दिए हैं हमको यहाँ पर, आज बड़ी एक स्ट्रगल रही 150 रन तक पहुँचने में, और उसके जवाब में केपी इतना टफ नहीं फील कर रहा है चेज को। ऑफ साइड में अब फील्डर्स की तादाद दायरे में 5 हो गई। बैकफुट पर खतरनाक अंदाज में खेलने गए थे यासिर शाह। विकेट टू विकेट नई गेंद का इस्तेमाल कर रहे हैं, यही इनकी कामयाबी का राज रहा है बरसा बरस से। LBW बोल्ड इसी सूरत में विकेटें लेते हैं, और इस बार हफीज ने ऑफ साइड की फील्ड का मज़ाक उड़ा दिया। खूबसूरती के साथ खेला, कदमों का इस्तेमाल करते हुए इस वाइड गेंद को, जिस पर उनको हाथ खोलने का भी मौका मिला। जहाँ कदमों का इस्तेमाल, गेंद की पिच पर पहुंचे और बड़ा जोरदार शॉट लगाया, बड़ी करारी आवाज आई इनके बल्ले से, इजीली सर्कल को क्लियर किया, बल्कि इनफैक्ट एक ही बाउंस बाद गेंद जो है वो 4 रन के लिए पहुंच गई। यासिर शाह विकेटों की अब सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं इस T20 क्रिकेट में, और विकेटों की आज ज़रूरत है बलूचिस्तान को। बैकफुट पर खेला, इस बार भी लेंथ को सही तरह रीड नहीं कर सके मोहम्मद हफीज। खतरनाक तरीका है यासिर को कोप करने का। करीबन 100 कुछ रन चाहिए 104 86 गेंदों पर।
या 85 गेंदों पर इतना कोई रश नहीं है इस वक्त केपी के बैट्समैन के दिमाग में, वो अपना टाइम ले सकते हैं। रिपीट करना चाहते थे उस शॉट को जो 2 गेंदें पहले खेला था मोहम्मद हफीज़ ने, लेकिन अपनी लेंथ को बदला यासिर ने। 6 ओवर्स मुकम्मल हो गए, 49 पर है। पावर प्ले मुकम्मल हो गया तो अब जो अगला फेज़ है इसमें 5 फील्डर्स दायरे के बाहर जा सकते हैं। अभी तक डीप थर्ड मैन है अहमद भट्ट के लिए, डीप स्क्वायर लेग है। फाइन लेग के फील्डर को भी उन्होंने पीछे भेज दिया है, आकिफ जावेद को। ये आपकी स्क्रीन के इंतहाई दाएं जानिब ऑफ साइड में थर्ड मैन के अलावा इमरान फरद को अब भेज दिया गया है स्वीपर कवर की पोजीशन पर। अहमद भट्ट बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। जब भी T20 क्रिकेट में उनको मौके मिलते हैं कभी मायूस नहीं करते। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, दाएं हाथ के बैट्समैन को आउट स्विंग करते हैं। लेकिन इस मरतबा शानदार शॉट, निहायत आला फुटवर्क और गेंद को पहुंचाया मिड विकेट बाउंड्री के उस पार। बड़ा जोरदार छक्का था, संभलने का मौका नहीं दिया फास्ट बॉलर को। बल्कि मॉडर्न डे क्रिकेट में पहली गेंद पर बैट्समैन चौका लगाना पसंद करते हैं। रिजवान जो हैं उन्होंने ये छक्का लगाकर मिस सेंचुरी मुकम्मल की अपनी टीम की। दाद देनी पड़ेगी रिजवान ने जिस तरह से अपने गेम को चेंज किया, पावर हिटिंग को भी अपने आर्सेनल का हिस्सा बना लिया है और बड़े क्लीन हिट्स लगा रहे हैं। इस बार भी डाउन द विकेट आके अहमद को उन्होंने जो 6 लगाया है वो अच्छा ज़ोरदार शॉट था। ये ज़रूरी है मॉडर्न क्रिकेट में कि आप अपने आप को लेस करें इन हथियारों से भी। ये पावर हिटिंग की ज़रूरत पड़ती है और बड़ा अच्छा इन्होंने अभी तक दिखाया पावर प्ले में भी अपना परफॉर्मेंस और इसके बाद भी कंटिन्यू करते हुए। ये अच्छी गेंद इस बार ऑफ द सीम मूवमेंट देखने को मिली। हाँ ये पिच मुख्तलिफ है, इस पर घास ज़्यादा है पहले 2 दिनों के मुकाबले में। इससे जब गेंद सीम के बल गिरती है तो बॉलर्स को मदद मिली है। रिजवान और हफीज़ एक दूसरे से ये अजनबी नहीं है, तो ये टी टाइम है। सिकंदर महसूस हो रहे हैं इस वक्त टपाल दानेदार से। It's always nice to have a good cup of tea, especially at this time of the day. The sun is setting. Good cricket in front of you और ये 2 रन भी यहाँ मुकम्मल कर लिए। एक दिन में कितने कप पीते हैं? जितनी बार मुझे दिखाते हैं मैं उतनी दफा मैं चाय पी लेता हूँ। वैसे अगर ये देखा जाए तो अभी तक ये गेम जो है ये एक तरफ टिल्ट हुआ है। कोई ऐसा मौका नजर आया नहीं जहां बलोचिस्तान कोई कैपिटलाइजिंग पोजीशन में हो। ये मुल्तान का सनसेट आहिस्ता आहिस्ता लाइट्स टेक ओवर करते हुए। लेकिन उम्मीदों को यहाँ डूबने नहीं देना बलोचिस्तान ने, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि पिच मुख्तलिफ है, मदद है बॉलर्स के लिए। ये देखिए फिर से सी मूवमेंट देखने में आई और स्पिनर्स को भी मदद मिली है आज इस पिच में। पहले हाफ में हमने यही देखा है। बिल्कुल थोड़ा सा मैं ये रिजवान ने जो 2 शॉट्स अभी अटेम्प्ट किए हैं अहमद की गेंद पर, अपनी जगह पे खड़े खड़े इन्होंने बैट को स्विंग किया है क्योंकि इनको विड्थ नजर आई। इन्होंने अपने आर्म्स को स्ट्रेच किया लेकिन कदमों का इस्तेमाल कहीं नहीं कर रहे, जिसकी वजह से रीच नहीं मिल रही इनको। स्पिनर्स ने ऑफ कोर्स अपना काम किया। यही एक डिफरेंस है जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि केपी ने रियलाइज किया इस चीज़ को और एक फास्ट बॉलर कम किया, आसिफ आफरीदी को लेकर आए। और बलोचिस्तान के पास तो खैर ऑप्शन ज़्यादा हैं, यासिर शाह और उसामा मीर 2 लेग स्पिनर वो खिला रहे हैं। इतनी वैरायटी है कि
केपी को शुएब मलिक की ज़रूरत ना पड़े, उतनी ज़्यादा रिलाय ना करें, हफीज़ उनके पास ऑप्शन रहा है। तो हाँ, आई थिंक जितना ये टूर्नामेंट आगे चलता जाएगा स्पिनर्स का रोल बढ़ता जाएगा। पिंडी के बारे में आप मुझे बेहतर बता सकते हैं कि वहाँ की सिचुएशन कैसी होगी। शायद आउटफील्ड उतनी तेज़ ना हो जितनी मुल्तान की है, लेकिन वहाँ ज़्यादा हेल्प किसको है? रावलपिंडी रिवायती तौर पर उसको फास्ट बॉलर्स की पिच कहा जाता है। अच्छी बैटिंग विकेट आमतौर पर तैयार होती है। अंपायर नासिर हुसैन आपको नजर आए, इसे पुल किया आप 1 ही रन मुमकिन हो सकेगा। दोनों बैट्समैन हैं ये सुई नॉर्दर्न के लिए खेलते रहे, हफीज़ और मोहम्मद रिजवान। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में कहा जाता है कि मोहम्मद हफीज़ ने ही मोहम्मद रिजवान को सुई नॉर्दर्न की टीम को ज्वाइन करने को कहा था, इन्होंने कायल किया था। तो अच्छी पार्टनरशिप ये हो सकती है, क्योंकि एक दूसरे को जानना ज़रूरी होता है पार्टनरशिप के लिए। सही बात है, अगर वो उनका कहना मानते हैं तो फिर तो अच्छी पार्टनरशिप होनी चाहिए आज। और काफ़ी बात भी करते हैं। हफीज़ उन खिलाड़ियों में से हैं जो साथ लेकर चलते हैं अपने अपने टीममेट को, स्पेशली बैटिंग में, और एक्सपीरियंस तो है ही बहुत हफीज़ के पास। ओवर मुकम्मल हो गया, 7 ओवर्स के बाद 58 फॉर 1। शाहीन अफरीदी ये पहली इनिंग्स के हीरो थे, आज 5 विकेटें हासिल की। टूर्नामेंट में पहले बॉलर बने हैं जिनने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। इससे पहले जब ये हैम्पशायर के लिए खेल रहे थे तो वहाँ पर एक ही मैच में 6 विकेटें ले ली थी। तो 6 खिलाड़ियों को बोल्ड किया था, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ। ये दुनिया के पहले बॉलर बने हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में 6 विकेटें बोल्ड करके हासिल की। विकेट को हिट करना इनको पसंद है। उसामा मीर लेग स्पिनर की जगह लेग स्पिनर आए, यासिर की जगह लेंगे। शाहीन का आपने जिक्र किया, आहिस्ता आहिस्ता फास्ट बॉलर्स भी अपना रोल प्ले करते हुए इस टूर्नामेंट में। कल हारिस रऊफ ने बड़ी शानदार बॉलिंग की, 4 विकेट्स हासिल की, 24 रन देके मैच ही पलट दिया उन्होंने। आज शाहीन की बड़ी उम्दा बॉलिंग। फास्ट बॉलर्स का आप जिक्र करें तारिक, तो उसामा मीर को अगर आप पहली बार मिले तो आपको लगेगा फास्ट बॉलर, 6'2 प्लस है। एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है इनको, ये इनका एडवांटेज है, और ये खतरनाक साबित हो सकते हैं। इनके पास अच्छी गूगली भी है। इस बार गेंद की पिच तक नहीं आ सके, एक ही रन पर इक्तिफा करना पड़ा। बहुत ज़्यादा तजुर्बा है इन्हें, दुनिया की मुख्तलिफ लीग्स में जा चुके हैं उसामा। हमें याद है जब ये 2015 में फैसलाबाद में T20 टूर्नामेंट, सुपर 8 T20 टूर्नामेंट खेलने के लिए आए थे, तो बेहतरीन बॉलर्स में से एक थे। अहम मरला है ये गेम का, ये स्टेज जहाँ पे बलूचिस्तान को कुछ थोड़ा इससे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करना होगा अपने लिए। एक आध विकेट चाहिए है, क्योंकि इतना बड़ा टोटल नहीं है। अब 100 से नीचे रन दरकार है। इन दोनों में से किसी एक को भी ज़्यादा टाइम दिया तो शायद फिर मैच हाथ से और ज़्यादा स्लिप हो जाए बलूचिस्तान के लिए। रेगुलर इंटरवल्स पे इनको विकेट हासिल करनी ही होगी, और उसके लिए अटैकिंग थोड़ा और अगर हो जाए तो बेहतर है। और इस बात को भी समझना होगा कि रन्स कम नहीं है इस पिच पर। खुद को यकीन दिलाने की ज़रूरत है कि अगर कल 180 रन बनाकर उनकी बॉलिंग ने मैच जितवाया था, तो आज 152 रन को भी ये बॉलिंग लाइनअप डिफेंड कर सकती है, क्योंकि बहुत ताकतवर बैटिंग लाइनअप नहीं है केपी की। तजुर्बा ज़रूर है, रिजवान बेताब हो रहे हैं, स्ट्राइक से छुटकारा चाहते हैं। अच्छी फील्डिंग की इमामुल हक ने। एक और ओवर जाता रहा 60, 1 विकेट के नुकसान पर।
शफक झलक रही है इस वक्त मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के ये सामने वाले इंक्लोजर्स पर। बड़ा खूबसूरत मंजर होता है यहाँ पर जब सूरज डूबता है। आज दिन भर ये आग बरसाता रहा, लू चल रही थी, लेकिन शामें बड़ी खुशगवार हो जाती हैं। फिर बैकफुट पर खेलना पसंद किया मोहम्मद हफीज ने। विकेटें लेना होंगी क्योंकि ये 152 रन अब एक ही सूरत में डिफेंड कर सकते हैं। जब आप विकेटें लेते रहेंगे कंटेन नहीं कर सकेंगे। रिजवान आज ओपनिंग करने के लिए आए हैं। साहबजादा फरहान को उन्होंने डिमोट किया, पिछले मैच में वो टॉप स्कोरर थे। थोड़ा हैरानगी तो हुई, टॉप स्कोरर को, ओपनिंग बैट्समैन को आप डिमोट कर दें। आई थिंक इतने ऑप्शंस हो गए हैं टीम्स के पास कि पता नहीं चलता कि किसको कहाँ खिलाया जाए। आपके पास ऐसे भी प्लेयर्स मौजूद हैं टीम में जो बड़े फ्लेक्सिबल हैं, जो किसी भी ऑर्डर किसी भी नंबर पे आप फिट कर सकते हैं। इस बार गेंद को अपने सीधा बल्ले के नीचे लाने में कामयाब हो गए हफीज। बड़ा एफर्टलेस शॉट लगता है उनका, अपनी जगह खड़े खड़े जोरदार शॉट लगाते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर आर्म्स हैं इनके, बड़ी स्ट्रॉन्ग रिस्ट हैं हफीज की, अगर आपने कभी हाथ मिलाया हो इनसे। और आजकल ये गोल्फ भी तवातुर से खेलते हैं और ये बैट स्विंग है, ये जो गोल्फ की स्टिक होती है उसी तरह की स्विंग से ये शॉट खेल रहे हैं। इंग्लैंड में भी नज़र आया था, मैनचेस्टर में। उसकी तस्वीरें हम देखते रहते हैं अक्सर उनके ट्विटर अकाउंट पर। इंग्लैंड में भी गोल्फ खेल रहे थे। और एक बार फिर जोरदार शॉट खेला हफीज ने, एक और छक्का। जारहाना बैटिंग का मुजाहरा, बड़ी अच्छी T20 फॉर्म में है मोहम्मद हफीज। तो तेज गेंद कर रहे हैं यहाँ पे यासिर, और ये टू द लाइकिंग ऑफ हफीज जो है उनको आसानी हो रही है। बिल्कुल थ्रू द लाइन मार रहे हैं इस वक्त हफीज। 2 छक्के वी में बड़ी उम्दा तरीके से। दूसरा ये टक सिक्सर था। जी हाँ, 20 और दरख्त ऐड कर लीजिए टोटल में टक और PCB की तरफ से। ये बेहतर लेंथ है। तेज गुगली थी, स्ट्रोक खेलने में जल्दी करनी पड़ी। दोनों बैट्समैन रीड नहीं कर रहे इनकी गुगलीज को, इससे क्रीज में खड़े खड़े खेलना चाह रहे हैं। हफीज के मुतालिक मजहर ने बताया है कि पिछली 4 T20 इनिंग्स में ये 12 छक्के लगा चुके हैं। इन्हें ज़्यादा दौड़ना भी पसंद नहीं है। 9 ओवर्स मुकम्मल हुए, 76 पर 1। तो 11 ओवर्स में 7 की औसत दरकार है। दूसरी जानिब विकेट दरकार है बड़ी शिद्दत से बलोचिस्तान को। दोनों टीमों के दरमियान इससे पहले एक बार मुकाबला हो चुका है, KP ने जीता था। बड़ा इंपॉर्टेंट है तारिक, अगर आपकी बैटिंग साइड आपको इतना बड़ा टोटल करके ना दे तो बॉलर्स बड़े लिमिटेड हो जाते हैं, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। उनको पता होता है कि डिफेंड करने के लिए टोटल इतना बड़ा नहीं है, तो अटैकिंग ऑप्शंस जो हैं वो सिर्फ रह जाते हैं इनमें। बड़ा अहम होता है कि अगर आपकी बैटिंग साइड आपको एक अच्छा टोटल करके दे तो बॉलर्स जो हैं वो थोड़ा और एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने आप को फ्रीली। उनके पास एक सर्टेन लेवल क्वेश्चन होता है गलती करने का। इधर 150 प्लस डिफेंडेबल होगा तभी जब विकेट्स हासिल होंगी। वाइड से बचने के लिए अपील की थी काफ़ी ज़ोर से बिस्मिल्लाह खान ने, लेकिन अंपायर वलीद को वो रोक नहीं सके। ये अच्छे अंपायर हैं वलीद याकूब। ये ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत ही मशहूर अंपायर गुजरे हैं, साइमन टॉफल
ये खुद को उनका शागिर्द करार देते हैं। वो जब आते थे लाहौर, इस दौरान 4 रन्स के लिए गेंद को खेला है हफीज़ ने, बड़ी महारत से लेट प्लेस करने में कामयाब हुए। जी, तो जब भी लाहौर आते थे तो फिर आप आगे बता रहे थे, ये ख़ास तौर पर जाकर उनको मिला करते थे, साइमन टॉफल से टिप्स लेते थे अंपायरिंग के मुतालिक। आशिक कुरैशी मुल्तान से जिनका ताल्लुक था, मशहूर क्रिकेट और ऑर्गेनाइज़र गुजरे हैं, उन्होंने बहुत उनकी डेवलपमेंट में उनका भी बड़ा हाथ रहा। इस बार उठाया फील्डर हैं और ना ही चौका बचा सके, और कैच वैसे ही उनकी पहुंच से बाहर था उमैद आसिफ की। 4 रन्स मिल गए। उसामा बिल्कुल भी खुश नहीं। बिल्कुल उनका नाराज होना बनता है, क्योंकि ना ही इन्होंने बाउंड्री रोकी और ना ही कैच को पूरी तरह अटेम्प्ट किया। शायद इन 2 माइंड्स हो गए। अटेम्प्ट तो करने आए थे आगे उमैद, लेकिन उसके बाद एक ऑड बाउंस उनको मिला और इज जस्ट इन नोवेयर बिहाइंड द बॉल कि उसको रोक पाए। ये और डेफिनेटली उसामा का नाराज होना बनता है। इस बार फिर शॉर्ट गेंद थी और ये सजावार थी 4 रन्स के लिए। हफीज़ बड़ी उम्दा बैटिंग कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि बाउंड्रीज मिलती रहें। बॉलर जो है वो ख़राब गेंदें कर रहे हैं। T20 क्रिकेट में अच्छी गेंदों पर भी चौके लगते हैं, लेकिन ये ख़राब बॉलिंग कर रहे हैं। आई थिंक ये थोड़ा बहुत बॉलर जो है ना वो दिल बर्दाश्ता हो जाता है। पिछले बॉल की जो फील्डिंग हुई है उसके बाद इन्होंने जल्दी में एक बॉल कराया हाफ ट्रैकर। इस बार ऑफ द बैक फुट खेला 1 रन के लिए। महंगा ओवर मुकम्मल हुआ उसामा मीर का। 10 ओवर्स के बाद 91 पर 1। Well, the worm has lifted off. It's gone in a different direction altogether. 91 of the first 10. KP holding all the aces well. They've held them for quite a while. And that maybe is the Balochistan bowling just waiting to lift off. KP has already lifted off. Easily cruising towards the victory. Mohammad Hafiz, he needed runs, and the way he's playing today, it's brilliant. It's justifying the talent he has. And Rizwan, on the other hand, providing a good platform. He's one of those players who never makes ugly runs. Whenever he does make runs, it's always eye-catching. But his form in T20 cricket over the past couple of years has been phenomenal. And we've seen today he's already overtaken Rizwan. He's off. He's 34 of 20. But he's come of age. Well, back end of his career has really come of age in T20. And that's why this KP side is one of the teams to watch. They've got bowlers who can win you the games single-handedly. We saw that today with Shaheen, who took 5 wickets, but the batsmen can, well, can't hit as big as that. I don't think that the ball will get there, but they can go big. It's a beautiful view of the evening of Multan Stadium. Shot and dismissed. Hafiz did not like that. It was almost like an insult. He told me a bouncer, why did you do that? Smashed away. 50 partnership comes up with that glorious pull shot.
Oh, that's a beauty. This is regulation for Hafiz. I mean, he's so well settled in. He can play these shots all day long. It seems like it's a maximum. Yes, it is. Smash that, really, out of the middle. So 10 more trees to be planted. PCB and Tuck will be planting those trees. They'll really get busy. We've seen a lot of maximums if he's adding to that tally as well. But yes, I was half expecting this from KP, because first game, after that you would think that that's a bad game out of the way, and now it's back to what we know that they can do. Yeah, they needed that call. I mean, they're pretty balanced side. Almost 8 test players in it, regulars with T20 cricket. They have redeemed themselves. Their team to watch. 100 up for KP. Yeah, again, there's a slight disparity in our dress code as well. It's been, I think, we've been made to wear white and black, which is so regulation, and we've not been allowed to wear any color. You're just jealous because we've got this Correct. beautiful green color. Exactly. But one of the presenters, she doesn't like green. She wears whatever she wants. Anyway, 11 gone. It's 101 for 1. .57 of just 37 deliveries, and Hafiz 41. Hafiz just taken off. He does have the power and does. White ball cricket, lower down the order is his destructive whip. Pakistan moving forward need to think about where Hafiz bats in T20 cricket, because he's last couple of years has proven that he can add that impetus at the back end, power hitting. I think he should now be regarded as one of those power hitters that they are looking for. Nicely played through the offside, a couple of runs. When Hafiz did start cricket, this is going back a fair way. Started off playing a lot of tape ball cricket, and he was paid to play tape ball cricket, and apparently whenever he's playing in a tournament, Hafiz, his nickname is Chanda. Whenever there was a tournament, you'd have banners saying "Bacho Chanda aa raha hai." So I think he'd always possess this ability to play those big strokes and to be that power hitter. And maybe I'm wrong, but I just have a feeling that maybe Pakistan did miss a trick, and Hafiz himself maybe missed a trick that he didn't earlier on in his career move down the order, because especially in the limited format, I think his utility down the order is exceptional, as is the utility of the drone high up in the sky. Hafiz has been ticking all the boxes for T20 this year. Brilliant 250s against England. Early in PSL, we saw 98 not out. That was an extraordinary innings by him. He was single-handedly taking the game away and played some brilliant shots. So something to think about.
right now, again in sublime form. Yeah, a couple of runs. We've talked about during this tournament that bowlers have come under the pump. The good thing about that is that looking forward, you look at the World T20, the way that the scores are getting bigger and bigger. I think this will make sure that the bowlers do learn those defensive skills. And we tend to overlook that. Mostly our cricket, or mostly our mindset is that we should be aggressive, we have those bowlers who can get wickets and make sure that you're always in the games. But equally important are defensive skills in T20 cricket. I think the defensive skills actually work as a positive, because that builds towards the wicket. So once you get into a situation where it's a high scoring ground, quick outfield, you have to adapt very, very quickly. And if Hafiz plays shots like that, there's no place that you can hide. That was exquisite shot by Mohammad Hafiz, well settled in, a beauty and a delight to watch. Just a mere push, back foot punch, piercing the gap, and there's no stopping for that shot. Hafiz is focused, and in the middle, he's shining. Especially when we talk about the range of shots and the improvisation the batters are bringing to T20, especially in the modern game, you as a bowler need to get something in your bag as well, because now it's a 360 game. There are ramp shots, there are scoops, there are reverse, switch hits, so many things. So as a bowler, probably a bit cruel game, T20. Short one, and finally Hafiz departs. A big wicket, but that's skidded off the surface. Hafiz beaten for pace, but a fantastic innings nonetheless from Hafiz. Out for 45, Akif with a quick bouncer. Akif strikes. Yeah, just got tall on him. Hafiz wasn't in control of that shot. And a bit relief for Balochistan. He was looking in sublime form. Must be gutted. Couldn't just capitalize on the start, but a brilliant innings, 45 off just 25 balls. Mohammad Hafiz has to walk back. Iftikhar Ahmed walks to the crease. Hafiz batted superbly, and he needed a superb delivery to get rid of him. A bouncer that really skipped onto him near the shoulder of the bat, ends up just spooning it up to the bowler. Good bowling, but you just think that the damage of that Hafiz innings has been done. Ahmad, but he's brought back into the attack. He bowled well with that first spell, got the ball to swing, even got extra bounce. And they probably need extra bounce. They need a few wickets in a hurry. Quite is underrun the run of balls, so only way back is that if they can get a few wickets and then apply the pressure. Rizwan
wants to bat out and make sure his team crosses the line. And you could, well, you could just rotate the strike and win the game, but there's no fun in that. Well, not many threats for KP at this moment. They can easily cruise towards the win, but for Balochistan, they need some miracles. We were talking about how T20 cricket has turned out a bit probably cruel towards bowlers, but every now and then deliveries like the previous one Akif produced can get some wickets. But yeah, they need quick wickets in quick succession. Iftihar and Rizwan has all the ability to take KP across the line. Driven on the up, and maybe that's, well, obviously check. On Farad doing the fielding, he's not sure either, but it's been timed superbly. The outfield, well, lightning quick. It's a good shot, good looking shot. May push and seems like a four to me. Good effort though by Imran Farhat. It seems as if that will be declared a boundary. Imran wasn't too sure, but it just so much speed off the surface, it goes so quickly towards that fence. It's a difficult one to call, but at first angle it just suggested that maybe it was a boundary. This angle now I'm not too sure, so glad I'm just a commentator and not looking at these pictures. It looks like that he had a few fingers on the ball as his shoulder was touching advertisement area, but well, umpires are the better one to call. I just wanted to know your point of view with all these leagues coming in, T20 leagues, T10, Super Sixes, and a lot of talk going on regarding Test cricket, whether it should be 4-day or 5-day game. How important even today Test cricket is to develop a better cricketer? I think you ask any player, you ask all the players all around the world, you ask any former players, they'll always say that Test cricket is the ultimate test, and it is the, well, in cricket the only discerning factor from other games is the long 5-day test match which tests your skill no end. I'm still a believer that that is the one format that makes cricket stand out from the rest of the sports that are played all around the world. Call me a traditionalist, but I still want 5-day test matches. I don't think that the format needs any tweaking. I think you get results on, well, now even 95% of the games that are played. Obviously, if you're playing a game for 5 days, there will be dull moments. There will be sessions where nothing much happens. But that all builds up to that crescendo where everything does happen. So good things come to people who wait. So I don't think there's any need to actually change anything in Test match cricket. You can tweak around with white ball format, because that, especially T20, is geared for non-stop action, which is geared for entertainment. But I tell you what, the last day or last session of a Test match, the tension, the engrossing cricket that's played then, I don't think that any other format even comes close to it. I totally agree with it. And recently we've seen some really extraordinary Test matches going down the line and some exceptional comebacks from both batters and
bowlers. And I think the crucial times, the dull moments you were talking about are actually the moments where players stand out as individual, where teams stand out and where captaincy stands out. Short and smashed. You don't bowl there. Iftikhar just stood tall and he's crashed it to deep in wicket. Impeccable timing on that shot. Iftikhar standing and just the swing of the bat right out of the middle, raced away for 4 runs. Not a good length, especially at this stage of innings and on this wicket to bowl. Goes short again and has to fetch that too. Back-to-back boundaries to end the 13th. It's 123 for 2. $123 for 2. KP doing this easy. It seems that it's inevitable that they'll cross the line. Just 30 to get of the last 7. A lot of games in this national T20, back-to-back games. Do you think that helps the player, or because you can't dwell over any failure, or were you one who would like a few days off to get away from the game? I think it has its pros and cons, but on a positive side, yes, it helps. You need to look forward for the next day, for the next match right away. Just pick up your negatives and positives and be in the mindset. So yeah, according to me, I think that the more quickly you analyze things with quick reaction, you can pick things up and then just work on them, focus on them. And again, you get another opportunity the next day, the very next day. That is a positive for me. The other thing is that the unfortunate thing is that obviously COVID-19 and you have to now be in a biosecure bubble. You can't really do much. So if you get games every other day, it's pretty good, because I would imagine it'd be so difficult having to just sit in the hotel room and just not being able to experience life as you do. So maybe it's a sense of relief when you're actually coming here and playing a game rather than having to go through all that. How did your 5 to 6 months went in COVID? Well, at first it's all right. I think you need to ask my family rather than myself. I think they'll probably be more tired of me. But yeah, the first couple of months were okay, because thankfully I'd been working a lot before that, so it was a welcome break. But the thing that you basically start missing is normal way of life, just going out, just life as we know it. But I don't think I can complain that it went really badly, because although I live in what people consider a very dull city, but the pro of living in a dull city, that is very picturesque. So you can always go out and have a cycle ride and come back refreshed.
I've always loved Islamabad. It's probably living in Lahore with a lot of noise around you. I think Islamabad is kind of a place you can go and just be peaceful, get time and space to yourself. So I would take that any day. And well, yeah, COVID has been difficult, but gladly so. All credit to PCB. PCB is the first cricket board to announce the domestic season right after COVID. And I think cricket is back, excitement is there, and there can be no better timing to set the season off, a jammed-packed season. Calling for 2, and he'll get those easily. Brace to end the 14th. It's 129 for 2. Contributions all around with the bat. Pakhtunkhwa 25, Rizwan still out there 45. He's with a classy knock as usual when he makes runs. You remember then 45 of just 25. He made 24 runs, now required of last 6. Usama Mir. Still got another match after this, Central Punjab versus Sindh. Looking forward to how Abdullah Shafiq plays for Central Punjab. A fantastic 100 he got in the first game, and now I think more people will stand up and take notice when he does come to bat. So people say that the debut is a lot of pressure, the first game is a lot of pressure, but I actually believe that the second game or the third game is even harder, because if you fail in that first game, then the pressure of succeeding is there in that second game. If you do well, then the pressure of people actually noticing or keeping an eye out for that player becomes eminent. So it'll be interesting how he goes about his business today. That's why it said that cricket has to be a one-day thing. If you're probably playing for one day in T20s for a player, the day finishes, your performance is done. You need to start fresh. So whether it's a bad performance or a good one, you're out in the middle again. You have to perform. You have to win it for the team and yourself. And yes, again, consistency is really important in modern cricket. You need to be consistent with your mindset. There's an appeal, a big appeal, but no, Zamir Haider doesn't budge. So Amir thought that it got Rizwan, but no, it's just a dot ball. 15 gone, it's 132 for 2. बड़ी रस्मी सी कार्रवाई बाकी रह गई है। एकतरफा कर दिया था मोहम्मद हफीज़ और रिजवान की पार्टनरशिप में इस मैच को। ये आप देख सकते हैं खुलासा इस मुकाबले का। बलोचिस्तान को टॉस जीतकर पहले बैटिंग रास नहीं आई। इमरान भट्ट ने 37 रन बनाए, हारिस सुहेल ने 29 रन के साथ मुज़ाहमत की। जवाब में रिजवान ने अच्छी बैटिंग की है। आज ओपनिंग करने चले आए थे
और इस पोजीशन पर अब तक अच्छा खेलते हुए नजर आए। आमतौर पर टीमें, शेज़र मोहम्मद मेरे साथ हैं कमेंट्री बॉक्स में, उनसे जानते हैं वर्ल्ड वाइड जो ट्रेंड है, टीमें टॉस जीतकर मुखालिफ टीम को पहले खिलाना पसंद करती हैं, रन चेज पसंद है T20 में। लेकिन यहाँ कदरे इवन स्टीवन है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में। ये 57वां T20 मैच है। 25 बार यहाँ पहले बैटिंग करने वाली टीमें भी जीत चुकी। यहाँ ज़रा मामला मुख्तलिफ है। अपनी तो टीम अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से खेलेगी। इनका जो प्लान था उसके हिसाब से इन्होंने थोड़े से रन कम किए थे, लेकिन बहुत बड़ी हिट मारी है। 50 फॉर रिजवान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। बहुत बड़ी हिट मारी रिजवान ने अभी। आउटस्टैंडिंग 6 दिखा रहे हैं कि अपनी क्लास अपने लास्ट सीजन में मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे, और अभी इन्होंने टाइम लेके एक आउटस्टैंडिंग 50 की है केपी को लीड करके। यासिर शाह पे अभी इस बॉल पे टारगेट और ये अगेंस्ट द टर्न उन्होंने हिट लगाई, जो कि आसान नहीं होता बैट्समैन के लिए। लेग स्पिनर को लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का लगा दिया। 19 सेंचुरी मुकम्मल की शानदार शॉट के साथ रिजवान ने। इस बार ज़्यादा एतमाद का मुजाहरा नहीं कर सके। 4 रन मिल गए आउटसाइड एज पर। मोहम्मद रिजवान आज खुशकिस्मत रहे हैं, लेकिन ये बात हम यासिर शाह के मुतालिक नहीं कह सकते। यासिर शाह अभी बहुत गुस्से में लग रहे हैं। 2 बॉलों पे उनको 10 रन जो लगे हैं। रिजवान लगता है कि जल्दी मैच ख़त्म करना चाह रहे हैं, और लगता है कि 1-2 ओवर पहले ही शायद ये मैच ख़त्म हो जाए। इफ्तिकार को भी थोड़ी क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने आके ही ऑन दिया। अब क्या 1-2 चौके लगाए हैं। वाह। और उसकी वजह ये है, जल्दी इसलिए ख़त्म करना चाह रहे हैं कि पिछले मैच में इनकी टीम को बहुत बड़ी शिकस्त हुई थी 242 रन बनवाने के बाद। वो जो मार्जिन है वहाँ पर ये अपनी नेट रन रेट को मज़ीद बिगड़ने से आज बचा सकते हैं, और ये 3 ओवर पहले मैच को फिनिश करते हैं, जो कि कर सकते हैं। जी बिल्कुल, रिजवान की आईक्यू बड़ी अच्छी है। इसको भी पता होगा कि अभी आखिरी गेंद रन हासिल नहीं कर सके। खुश नहीं है रिजवान इफ्तिखार अहमद की रनिंग से। ओवर जाता रहा 143 पर 2। एक 152 रन बनाए बलूचिस्तान की टीम ने, जो कि बड़ी हद तक कम लग रहे हैं। टूर्नामेंट में किसी भी टीम का पहले बैटिंग करते हुए सबसे कम स्कोर था। इस चौके के बाद ये हदफ मज़ीद कम रह गया। अब सिर्फ 6 रन की ज़रूरत है। बैकफुट पर अच्छा खेलते हैं रिजवान और इफ्तिखार दोनों ही। जी एक आसान जीत केपी के लिए। इफ्तिकार आए, उन्होंने दिखाया अपना कॉन्फिडेंस। शुरू से ही उन्होंने शॉट पे शॉट्स खेल रहे थे, और लगता है कि उसामा मीर को भी थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना पड़ेगा टू फिनिश स्ट्रॉन्ग। यासिर शाह खुद अच्छे खासे एक्सपेंसिव रहे। अगर बलूचिस्तान को ये मैच जीतना, उनको शुरू में विकेटें चाहिए थी, लेकिन कॉन्फिडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी केपी के बैट्समैन ने दिखाई है फॉर एन ईजी विन। पॉइंट पर उमैद आसिफ हैं, लेकिन दूसरा रन नहीं लेने से रोक सकेंगे बैट्समैन को। इसके बाद अगला मुकाबला होने वाला है। बहुत ही अहम मैच है सेंट्रल पंजाब और सिंध की टीमों के दरमियान। इसमें आपको बड़े बड़े नाम नज़र आएंगे दोनों टीमों से, खासतौर पर सिंध से। जी बिल्कुल, दोनों टीम में बिग हिटर्स हैं, और एक मुकाबला बड़ा अच्छा होगा सेंट्रल पंजाब और सिंध का। डिपेंडिंग अभी विकेट जैसे पिच जैसे चल रही है, आउटफील्ड तेज़ है यहाँ पे। 200 हर इनिंग में टीम स्कोर करना चाहती है। आपको क्या लगता है कि टॉस पे फर्क पड़ेगा? एक रन का और इजाफा। जिस तरह की ये पिच है, जिस तरह इस पे घास है, नाइट मैच है, मेरा नहीं ख्याल कि टॉस कुछ ज़्यादा
कुछ ज़्यादा फैसला कौन होगा। आमतौर पर बेहतर खेलने वाली टीमें ही अब तक जीत सकी हैं। ये देखिए ज़्यादा खुश खेमा है आज केपी का। यही सबसे अच्छी टीम जो है लगी आज। मज़हर अरशद जो हमारे स्टैटिस्टिशियन हैं, उन्होंने टूर्नामेंट शुरू होने से बहुत दिन पहले ही फेवरेट करार दे दिया था केपी को इस चैंपियनशिप के लिए। और ये जोरदार छक्का लगाया इफ्तिखार अहमद ने, और गेंद हवा से बातें करती हुई आई मैदान के बाहर, और इस तरह ये मुकाबला जीत लिया है खैबर पख्तूनख्वा ने। आज 8 विकेटों के बहुत बड़े मार्जिन से। कल इनकी बॉलिंग नाकाम हुई थी और बैट्समैन मुश्किल में नज़र आए थे 243 के हदफ के ताकुब में। आज हदफ 153 का था और ये तरने वाला साबित हुआ रिजवान एंड कंपनी के लिए। फ्रंट से लीड किया रिजवान ने, निस्फ सेंचुरी बनाई टूर्नामेंट में। जी बिल्कुल, बड़े कमांड से केपी जीते। कैप्टन ने आउटस्टैंडिंग 50 की है, तो अभी जैसे केपी ने ये मैच जीता है, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा मैच के साथ। लास्ट ईयर के इनके टूर्नामेंट में, अभी इस साल में ये लोग, इनकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है तारिक। इनको पता है कि अपने अपने रोल में क्या करना है। शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज़ का एक्सपीरियंस, रिजवान की लीडरशिप, इनको बहुत अच्छा एक टूर्नामेंट में लगता है वन ऑफ द टॉप टीम्स होगी। और आज बहुत फ़र्क आया। वहाब रियाज एक बिल्कुल मुख्तलिफ क्रिकेटर नज़र आए ग्राउंड पर। एक बड़ा ही नाकाबिले यकीन कैच पकड़ा, बहुत शानदार बॉलिंग की, तेज़ बॉलिंग की। पिछले मैच में वो बिल्कुल ऑफ लग रहे थे, सारी टीम गिर गई थी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं तारिक। रिदम एक चीज़ होती है क्रिकेट में। पहला मैच था सीज़न का, अभी इन्होंने दूसरे मैच में टीम कंबाइंड एफर्ट दिखाई, आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा इन्होंने, और अभी सब मिल रहे हैं एक दूसरे से। इनको पता है सब एक बबल में रह रहे हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं, लेकिन जब इन टू द रोप जब जाते हैं तो एक कंपेटिटिवनेस आ जाती है, और सबको पता है कि ये टूर्नामेंट अच्छा स्टार्ट करेंगे तो एक कॉन्फिडेंस जब ही आएगा। बलोचिस्तान अब 1-1 है, आप क्या कहते हैं? जी हाँ, बलूचिस्तान की टीम को खासी मेहनत करना पड़ेगी। ये आप देख सकते हैं फ़खर जमान जो आज अच्छे लग रहे थे, 25 रन बनाकर आउट हो गए। बिस्मिल्लाह ने उनका कैच लिया बट की गेंद पर, और हफीज़ ने बहुत उम्दा बैटिंग की। सही मानों में उन्होंने इस मुकाबले में अपनी टीम को जीत की तरफ गामजन किया। 25 गेंदों में 45 रन बनाए। गलती ये हो गई कि उनके खिलाफ स्पिनर्स को आजमाया गया दोनों एंड से, वहीं पर वो चौके छक्के लगाते चले गए। रिजवान हीरो थे, बैटिंग हीरो। जी बिल्कुल, हफीज़ तो लग रहे हैं कि अभी बॉलिंग अगर आप स्टैट्स देखें तो विकेटें लेनी ज़रूरी थी इनके टॉप बॉलर्स को, बट यासिर शाह वी डिड नॉट गेट एनी विकेट्स। आकिफ ने 1 विकेट ली है, माद बट ने 1 विकेट ली है। बॉलर्स अगर स्पिनर्स आउट करते शुरू में तो मैच का रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था, लेकिन 157 फॉर 2 कॉन्फिडेंट कंफर्टेबल विन केपी के लिए। पार्टनरशिप्स आज हम देखते रहे। पहली विकेट के लिए 44 रन बनाए, दूसरी विकेट के लिए 66 रन का इजाफा हफीज़ और रिजवान ने किया। यही दोनों टीमों के दरमियान फ़र्क रहा बैटिंग का। राइट टॉस जीता था हारिस सोहेल ने। ये टूर्नामेंट का ट्रेंड है, उसके मुताबिक उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। दोपहर का मैच था, वो फैसला रास नहीं आया बलूचिस्तान को। तो इस मुकाबले की इनामी तकरीब आने को है आपकी स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले होगा एक वक्फा। प्रेजेंटेशन तो पहले होगी तो उसके बाद फौरन
सर ये आपके फ्रेंड है यहाँ सामने यहाँ पे चेक कर लो माइक ऑन है check 1 2 check. I'll make a last minute decision depending on where everybody is in terms of presentation. It looks like right now, right, it looks like we might come back to the match summary highlights and then go to the presentation. You just have to follow and trust me that I'm leading you in the right direction. 1 minute to back on. Sikandar, can you hear me? Just give me a thumbs up. Come right, show me Sikandar. Yeah, okay. Tell me, how many? 10 seconds to roll. एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में, जहां पर आज बलोचिस्तान की टीम ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 157 रन बनाए और 152 रन बनाए राधा 153 का हदफ आसानी के साथ सत्र में ओवर के अख्ताम पर हासिल कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा ने रिजवान इस मुकाबले में वाहिद खिलाड़ी थे जिन्होंने निस्फ सेंचुरी बनाई नॉट आउट, और इस तरह 8 विकेटों से केपी ने ये मैच जीता है और 2 कीमती पॉइंट्स हासिल किए। आज का मुकाबला जो था एक तरफा रहा। ये देखिए फ़खर इनिंग्स का आगाज़ करने के लिए आए थे, उन्होंने चंद बड़े अच्छे स्ट्रोक्स खेले ऑफ साइड में, बड़ा अच्छा टाइम करते रहे फ़खर की रेंज बड़ी है हालिया दिनों में ऑफ साइड स्ट्रोक प्ले की। रिजवान ओपनिंग करने के लिए आए साहबजादा की जगह पर, उन्होंने बड़ा अच्छा टाइम किया। रिजवान हमेशा पुल शॉट महारत से खेलते हैं, पुल और कट ये 2 उनके पसंदीदा स्ट्रोक्स हैं। यहाँ 25 रन बनाकर बिस्मिल्लाह के हाथों कैच आउट हो गए, अम्माद भट्ट के हाथों फ़खर जमान और मोहम्मद हफीज़ आए जिन्होंने पलक झपकते ही इस मैच का पांसा पलट दिया। 2 लगातार छक्के लगाए यासिर शाह को सर के ऊपर से, जिसके बाद बॉलिंग के चिराग थे इनमें ज़्यादा रोशनी हमें नज़र नहीं आई। उसामा मीर ने कदर बेहतर स्पेल किया लेकिन फील्डिंग अच्छी नहीं थी, ये टीम गलतियां करती चली गई। मोहम्मद हफीज़ अपनी टीम को जीत के बहुत करीब ले आए थे जब वो हॉट एंड बोल्ड हुए आकिब जावेद के हाथों। अम्माद भट्ट इस वक्त सामना कर रहे थे इफ्तिखार, जिन्होंने चंद बड़े अच्छे स्ट्रोक खेलकर इस मैच का इख्तिताम किया। ये रिजवान के खिलाफ कॉट बिहाइंड की अपील थी, ज़मीर हैदर ने इसे मुस्तरद किया। रिजवान ने पहली निस्फ सेंचुरी इस सीज़न में बनाई छक्का लगाकर, इफ्तिखार अहमद का ये छक्का केपी के सपोर्टर्स को याद रहेगा जो उनकी कामयाबी मोहर सब कर गया।
तो 8 विकेटों से ये मैच जीत लिया है केपी ने। और अब हम आपके लिए चलते हैं ग्राउंड पर सिकंदर बख्त की तरफ, जो तैयार हैं इनामी तकरीब के साथ। All right, thank you very much. We are here for the post-match presentation of Match 5 between KP and Balochistan. And it was a massive victory for KP today. They won that handsomely by 8 wickets. And the man responsible who created most damage on the opposition is Shaheen Shah Afridi. Shaheen, बहुत-बहुत मुबारक हो आपको मैन ऑफ द मैच अवार्ड आज का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सबसे पहले ओवरऑल परफॉर्मेंस आपकी बड़ी अच्छी रही है। लास्ट कुछ T20s में आपकी विकेट्स, एक रिकॉर्ड 6 बोल्ड किया आपने, 2 5 विकेट हॉल्स। Enjoying the rhythm? बिल्कुल, बॉलिंग को सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि आज फिर 5 जोड़ के एंजॉय करता हूँ बॉलिंग को। जिधर भी मौका मिले कोशिश करता हूँ कि टीम के लिए एफर्ट करूँ और अल्लाह पाक उसमें इज्जत देता है। बैटिंग के लिए काफ़ी साजगार हैं ये विकेट्स। एज अ फास्ट बॉलर क्या चेंजेस लेके आए पहले मैच से दूसरे मैच में इस रिजल्ट के लिए? मेरे ख्याल से पहले मैच में इतना आइडिया नहीं था कि विकेट इतनी फ्लैट होगी, बट उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि काफ़ी अच्छी विकेट है, उसमें अपनी जो लेंथ है उसको चेंज करना है और वही काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सक्सेस मिली। 4 ओवर में 20 रन 5 विकेट्स, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। थैंक यू फॉर एंटरटेनिंग अस। थैंक यू। आज के मैन ऑफ द मैच शाहीन शाह अफरीदी फ्रॉम केपी, बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस रही उनकी। अब मैं इनवाइट करना चाहूँगा हारिस सोहेल को, द कैप्टन ऑफ बलोचिस्तान, टू कम फॉरवर्ड एंड हैव अ फ्यू वर्ड्स विद अस। हारिस, काफ़ी जिक्र रहा है कि गुड बैटिंग विकेट्स हेयर इन मुल्तान, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस, हाई स्कोरिंग्स देखें। आपको लगा कि आज थोड़ा कुछ रन शॉर्ट थे टोटल डालने में? देखा जाए आज पिच भी थोड़ा डिफरेंट था, स्पिनर्स का बॉल थोड़ा ग्रिप हो रहा था, लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा केपी के बॉलर्स को कि उन्होंने अर्ली ऑन जिस तरह हमारे 3 आउट कर दिए थे, तो वापस फिर मैच में आना मुश्किल हो जाता है। जो आप सोच रहे होते हो लाइक 180 प्लस, वो जब अर्ली है ना आपके 3-4 आउट हो जाएं तो फिर प्लान चेंज हो जाता है। फिर आपको थोड़ा सा वो जो सोच रहे होते हो उससे कम रन होते हैं, जिस तरह हम लोग 150 पे सिर्फ 150 कर सके। थोड़ा सा मिडिल ऑफ द इनिंग्स अराउंड 10वें 11वें ओवर में जब आप भी बैटिंग कर रहे थे, थोड़ा सा टफ लग रहा था, रन स्कोरिंग या स्ट्राइक रोटेशन ज़रा डिफिकल्ट थी आज यहाँ पर? मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आई सही कि आवाज़ कम आ रही है। जी, मैं ये कह रहा था कि स्ट्राइक रोटेशन या रन स्कोरिंग थोड़ा कदरे डिफिकल्ट थी या टफ थी आज, जो कि ये टोटल 150 ऑड ही रह गया। देखें, जिस तरह हमारे 3 आउट हो गए थे, जब नए बैट्समैन आते हैं और उस टाइम पे बॉल थोड़ा स्पिनर का ग्रिप हो रहा था, तो अर्ली ऑन आके आपके उस तरह शॉट्स नहीं थे लग रहे, तो उस टाइम पे हम लोगों ने कोशिश काफ़ी सारी की, लेकिन फिर जब पार्टनरशिप एक लगी तो बैक टू बैक फिर आउट हो गए, तो फिर वो वापस आना उस चीज़ में मुश्किल होता है। Nevertheless, thank you very much for entertaining us, or good luck for the coming match. Thank you. Haris Sohail, captain of Balochistan, winning captain को दावत देना चाहूँगा। रिजवान, पहले मैच में आपने ऐसे ही हंसते हुए कहा था अभी पहला ही मैच है, थोड़ा सब्र करें, तो आज आपने प्रूव किया। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द विक्ट्री। थैंक यू। और अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे भी, ओपन करने में भी आप एंजॉय कर रहे हैं यहाँ सर्कल को? पहले तो देखिए जी, मैं टीम परफॉर्मेंस पे बात कर लूँगा कि जिस तरह शाहीन शाह की बॉलिंग थी वो तो एक्सेप्शनली थी, मगर ये क्रिकेट ऐसी ही गेम है कि सबको मिलकर करना पड़ेगा। अगर हम पहली मैच की बात करें तो जैसे आप सबके सामने कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की करंट पूरी टीम हमारी है, मगर जिस तरह वो खेले नॉर्दर्न एज ए टीम, तो उन लोगों ने जो है ना हमें आउटक्लास कर दिया था। तो ऐसी आज या शाहीन शाह तो एक्सेप्शनली था, इसके साथ वहाब भाई के स्पेल, आसिफ अफरीदी की बॉलिंग, तो हफीज़ भाई की बैटिंग, तो एज ए टीम वर्क करना पड़ेगा तो सामने रिजल्ट आएगा। अच्छा, यही बात मैंने शाहीन से अभी की थी कि पहले मैच के बाद आपने थोड़ा रियलाइज़ किया कि फास्ट बॉलर्स के लिए इतना कुछ नहीं है यहाँ पे, इसलिए एक कम फास्ट बॉलर आपने खिलाया आज। ये टेक्निक काम कर गई एक एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ। बिल्कुल जी, देखिए जी, अगर आपके पास कई जेन्युइन फास्ट बॉलर्स हो तो आप ज़रूर उस पर जाएंगे, क्योंकि पहला मैच था, फ्रेश पिच था, उसी कंडीशन को हम लेके जा रहे थे, शायद यहाँ पे रिवर्स के लिए बॉल बन जाए, तो हम उसी सोच पे जा रहे थे, मगर वो रिवर्स के लिए बॉल नहीं बना, उसी तरह रन होते रहे, तो इसलिए आज हमने थोड़ा सा एक फास्ट बॉलर कम करके स्पिनर खिलाया। आपकी अपनी परफॉर्मेंस बड़ा मज़ा आ रहा है, आपकी बड़ी हिट्स देख के, जो आप छक्के लगा रहे हैं ओपनर के, तो एंजॉय कर रहे हैं अपनी बैटिंग को? बिल्कुल जी, न्यू एक्सपीरियंस मेरे लिए, क्योंकि जो रोल दिया गया था कोच का, हम थोड़ा सा मशवरा किया था इस पर कि मैं ओपन के लिए जाऊँ, तो मैनेजमेंट मेरी से इस चीज़ पे एग्री थे कि आपने ओपन ही करना है, तो एक रोल दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अल्लाह पाक ने सक्सेस दे दी, और इस पर भी थोड़ा सा काम कर रहा हूँ बिग हिट्स पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से भी लग रही थी, मगर ये था कि सामने नहीं था, अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि सबके सामने आएगा इंशाल्लाह। Well, excellent, Rizwan. Congratulations on the win and the 2 points achieved. Thank you, ji. Thank you. And that is all from the presentation here.
आप कहीं दूर नहीं जाइएगा, क्योंकि आपसे कुछ देर के बाद अगला बड़ा अहम मैच खेला जाने वाला है। टूर्नामेंट का छठा मैच होगा मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में सेंट्रल पंजाब और सिंध की इंतहाई ताकतवर टीमों के दरमियान। यहाँ पर